प्रोफेसर अरविंद दीक्षित जी, पूर्व कुलपति आगरा विश्वविद्यालय, प्रोफेसर धड़पड़े जी, प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी, जो इस विश्वविद्यालय में हर कार्यक्रम में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित रहते हैं। चाहे जिस प्रकार की समस्या हो, हमारे यहाँ बहुत सारे टीचर भी उनसे जुड़े हुए हैं। चरण स्पर्श से लेकर के आशीर्वाद प्राप्त करने तक हर तरीके से, और वो भी सहृदयता दिखाते हैं हर कार्यक्रम में। जब भी हम याद करते हैं उनको, वो उपस्थित मिलते हैं, हमारे बीच मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच 3 बहुत अच्छे वक्ता हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर, उसके विभिन्न आयामों पर हमें बहुत सारे ज्ञान के क्षेत्रों से लाभान्वित कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में पधारे हुए प्रतिभागी गण विभिन्न कॉलेजों से, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए, ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से, मैं सभी का स्वागत करता हूं। और आशा ही नहीं, विश्वास है मुझे कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन की कॉन्सेप्ट, आल्दो जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड लोग हैं उनको इस अवधारणा के विषय में बहुत अच्छा नॉलेज है। वो लोग इसमें पहले से ही कार्य कर रहे हैं। सामान्य यूनिवर्सिटीज़ में ये अवधारणा विगत कुछ वर्षों से आई है और नई शिक्षा नीति में इसको बहुत ही गंभीरता से लिया गया है कि कैसे नई शिक्षा नीति का तात्पर्य ये नहीं है कि एक ग्रेजुएट जो एक विश्वविद्यालय में, एक डिग्री कॉलेज में प्रवेश लेता है, वो 3 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष के पश्चात एक कागज का टुकड़ा लेकर के निकल जाए। उसका तात्पर्य है कि जब वो प्रवेश ले तो उसके अंदर कौन कौन सी क्षमताएं हैं उनका आकलन किया जाए, और वो जब यहाँ से पास आउट हो किसी भी संस्था से, शिक्षण संस्थान से, तो उसमें कई सारे गुण होने चाहिए। उसकी सोसाइटी के प्रति, मानव समाज के प्रति, उसकी अपने प्रति, उसकी अपने परिवार के प्रति विभिन्न विभिन्न धारणाएं होनी चाहिए। जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा है वहाँ पर उसकी क्षमता किस लेवल तक विकसित हो गई है, क्या वो किसी चीज़ को समझने की क्षमता रखता है। कई बार हमारे सामने सवाल आते हैं, लेकिन हम उसको अलग अलग रूप में समझने का प्रयास करते हैं। यदि हमें समुचित ज्ञान होगा तो उसको हम सही विषय में, सही लाइन में जा करके उसको समझ सकते हैं। और एक बार जब हमें समस्या का समझ होती है तभी हम उसका निदान दिए हुए परिवेश में, किस जगह पर, किस समय और किस कालखंड में वो घटित हो रहा है, उसके अनुरूप उसका समाधान हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को एक छात्र या छात्रा के व्यक्तित्व में विकसित करने के लिए आउटकम बेस्ड एजुकेशन की परिकल्पना की गई है। इस पे हमारे बीच, जैसा मैंने पहले भी कहा, 3 वक्ता हैं जो बहुत ही अच्छा हमारा ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। तो उनका एक बार फिर से स्वागत करते हुए मैं चाहता हूं कि हम अपना समय कम लगाएं और उनको सुने ज़्यादा। पूरी ध्यान दे करके यदि हम सुनेंगे, निश्चित ही मैं विश्वास रखता हूं कि हम सभी को, आप सभी लोगों के यहाँ होने का लाभ अवश्य ही मिलेगा। इसी के साथ मैं मंच छोड़ता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया बहुत बहुत हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर। नैक क्राइटेरिया 1 की इंचार्ज होने की हैसियत से मैं ये बता सकती हूँ कि हम लोगों के क्राइटेरिया में सबसे पहला पैरामीटर सर 1.1.1 वो प्रोग्राम आउटकम्स, प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स और कोर्स आउटकम्स से ही रिलेटेड है। और जब भी हम लोगों की नैक से रिलेटेड मीटिंग होती है तो लगभग आधे घंटे हम लोग वीसी सर से इसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से हम अपने प्रोग्राम्स को और बेटर कर सकते हैं बाय presenting very specific program specific outcomes and course outcomes, and most of our courses are now aligned in that particular light. Without further ado,
I would like to take this opportunity to introduce Professor Manoj Dikshit, who is a professor of public administration at the Department of Public Administration, University of Lucknow, Uttar Pradesh. He is a widely known scholar in the field of public administration and public policy. Of course, he was also an adjunct professor in the School of Political Science and Public Administration in the University of Science and Technology, China, from 2011 to 2014. Sir is a highly traveled scholar. He has presented and published hundreds of papers, acted as chairperson and discussant in a number of significant international conferences. Apart from that, as you will also notice during his speech, he is a great orator and he has a very specific style of speech which we are very interested to listen to. Sir, हमारी यूनिवर्सिटी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारी यूनिवर्सिटी के एक बहुत अहम हिस्सा हैं हमारे यूनिवर्सिटी परिवार के, और लगभग सभी प्रोग्राम्स में सर हमारे साथ जुड़ते हैं और हमें कुछ नई बातें ज़रूर बताते हैं. सर, मैं आपसे अब निवेदन करूँगी कि प्लीज़ आप पोडियम पर आएँ और हमसे बात करें. सर, यू कैन यूज़ दैट पोडियम एज वेल. Thank you so much. Audience, please give a huge round of applause and welcome, sir. Thank you, Dua. National Education Policy 2020 आउटकम बेस्ड एजुकेशन के विषय पर आज जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें मुझे आमंत्रण देके एनपी सिंह साहब ने मेरे ऊपर भी बहुत बड़ा एहसान किया. आज कुछ तो समझ में आएगा कि एनईपी में है क्या. पिछले 2 सालों से मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें है क्या, और वो क्या है जिसकी परिकल्पना एनईपी की प्रस्तावना में लिखी. जो इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ने का है वो अवश्य इस बात का है कि चाहे आप कोठारी आयोग की रिपोर्ट पढ़ें, राधाकृष्णन आयोग की रिपोर्ट पढ़ें, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के डॉक्यूमेंट को पढ़ें और एनईपी के 2020 के डॉक्यूमेंट को पढ़ें, तो जो इंटरेस्टिंग पॉइंट समझ में आना चाहिए वो ये है कि उसकी प्रस्तावना में उसकी भूमिका क्या तय की गई है. और जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमको ये अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि हमारा रोल होने वाला क्या, क्या करने का मैंडेट हमें ये पॉलिसी दे रही है. 1986 की पॉलिसी ने एक मैंडेट दिया था कि वो शिक्षा को रोजगार का सशक्त माध्यम बनाने की कल्पना रखती है, और 1986 से लेकर आगे आने वाले दशकों में हमने रोजगार परक शिक्षा नाम का एक शब्द सुना, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन. नाउ दिस वाज, ये हमको ये बात को इसलिए समझना चाहिए कि पहले शिक्षा एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड नहीं थी. एम्प्लॉयमेंट वाज अ बाय प्रोडक्ट, नॉलेज वाज द प्रोडक्ट. हम आपको कुछ ज्ञान की बातें समझा देंगे, आपके व्यक्तित्व का निर्माण कर देंगे, आपकी क्षमताओं का विकास कर देंगे, आपकी जो क्षमता होगी वो आप बन जाओगे. लेकिन 86 ने तय किया कि नहीं, मूल मंत्र है नौकरी, और नौकरी के लायक हम आपको बना दें. आपने ये भी नोटिस किया होगा, एनपी सिंह भाई उस समय AKTU में अपनी सेवाएं दे रहे थे. TU की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके संबद्ध संस्थाओं की बात कर रहा हूँ. हर संस्था का एडवर्टीजमेंट आ रहा था, 100% जॉब ऑफर्ड, गारंटीड, और लोग भागते थे उन जगहों पे जहाँ पे 100% जॉब मिलते थे. बाद में वो क्रेडिट कार्ड बना बना के बेचारे परेशान होते थे कि ये कौन सा जॉब मिल गया हमें. लेकिन जॉब की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ा दी गई कि शिक्षा सेकेंडरी हो गई. कैपेसिटी बिल्डिंग सेकेंडरी हो गई. आपकी अपनी क्षमताएं जो आपके अंदर थी वो सब डॉर्मेंट की गई, दबाई गई. ये सब बकवास है, इसको मत करो. You will get a job only when you don't know all these. और एक पूरी जनरेशन हम लोगों की आंखों के सामने से निकली है. मेरे अग्रज अरविंद जी इस बात को सब्सक्राइब करेंगे कि ऐसी एक जनरेशन हम लोगों के सामने से अब निकल गई कि जिससे आप साहित्य की बात कर ही नहीं सकते. उसने वो पुस्तकें देखी, सुनी, सोची भी नहीं. वो सिर्फ टेक्स्ट बुक जानता है, वो भी शायद ना जानता हो ठीक से, नोट्स जानता है. तो
तो इस पीड़ा से जो हम लोग निकले हैं और उसके दुष्परिणाम हमने जो देखे हैं, उसका प्रतिफल थी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो आपको दो कल्पनाएं स्पष्टता देती है। एक तो ये कि आपको विश्व गुरु बनना है। विश्व गुरु कैसे बनेंगे? तलवार से या कलम से? तलवार अपने पास है नहीं, कलम की पूंजी हमारे पास पीढ़ियों से थी, हमें उसे मजबूत करने की क्षमता बढ़ानी होगी। ये पहला आउटकम होना चाहिए। मैं आउटकम पे ही रहूंगा। मैं सामान्यतः नोट्स लेके नहीं आता, लेकिन आज मुझे नोट कहा गया कि नोट बोलोगे, तो मैं नोट ले आया। क्योंकि ये मंच आज इतना समृद्ध है, इतना एक्सपीरियंस्ड है और इतनी क्षमतावान मंच है कि आपको बहुत सारी बातें आज इस मंच से मिलेंगी। और इससे पहले कि मैं अपनी बात को औपचारिक रूप से कहूं, मैं मंचासीन भाई NB सिंह, आदरणीय अरविंद दीक्षित सर और मेरे मित्र प्रोफेसर BA चोपड़े, जिनको हम एक एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने लाए। ये मेरी ही आग्रह थी कि मैं चाहता था कि चोपड़े सर यहाँ आए, और चोपड़े सर यहाँ आपके सामने 3 दिन रहेंगे। और धीरे धीरे, जैसा वो जो कहते हैं ना, पुरानी शराब का नशा धीरे धीरे चढ़ेगा, तो 23 तारीख को आप जब इन्हें विदा कर रहे होंगे तो आपको लगेगा कि ये ना जाए तो अच्छा है। वो एग्जाम्पल है, कई चीज़ों के एग्जाम्पल है। आज तो लाए नहीं है, वरना ये जब NEP का अपना नोट लाते हैं तो उसके अंदर हर शब्द के ऊपर उन्होंने रिसर्च की हुई है, हर शब्द पे। कोई भी शब्द वहाँ जो इस्तेमाल हुआ है वो क्यों इस्तेमाल हुआ है, उसकी जड़ तक जाने वाले शोध करता है, सोचते हैं उस चीज़ को। एक कारण है जिसलिए मैं चाहता था कि वो यहाँ इस विषय पर बोले। दूसरे, आप जो छात्र लोग बैठे हुए हैं उनके लिए एग्जाम्पल है कि आप छोटे से छोटे बैकग्राउंड से निकलकर बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकते हैं। उसका एग्जाम्पल है चोपड़े सर। तीसरी बात, नेशनलिज्म। आपने सुना होगा, परिचय में दुआ ने बताया, नॉटिंघमशायर से PhD भी किया, मास्टर्स भी किया, यूनिवर्सिटी ने भेजा भी, और उसके बाद पूरी दुनिया से ऑफर आए, यहां तक कि बच्चे भी बाहर हैं। लेकिन चोपड़े सर का एक ही काम है कि मैं रिटर्न टिकट लेके ही जाऊंगा जहां जाऊंगा, मुझे भारत नहीं छोड़ना। मैं भारत सेंट्रिक काम करना चाहता हूं। मेरी रिसर्च का यदि फायदा मेरे देश को नहीं मिला तो मेरी रिसर्च किसी काम की नहीं। इस प्रकार के रिसर्चर होने का एक सौभाग्य हम लोगों को मिलता है कि वे मेरे साथ तो हम लोग बड़ी क्लोज टीम में काम किए हैं, इसलिए हम बहुत एक्सपोजर है हम लोगों का। रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन में पूरी सेवाएं आपने ऑफर की। टेम्पल साइंस के ऊपर प्रोजेक्ट सरकार ने मांगा, कोई नहीं दिखाई पड़ा। भुजंग जी ने तुरंत कहा, चोपड़े सर आप थोड़ा समय दे दीजिए। चोपड़े सर सब छोड़ कर बैठ गए और रात को 12-12 बजे तक बन के वो प्रपोजल बने। तो एक रिसर्चर को कैसा होना चाहिए, ये किसी शिक्षा का आउटकम नहीं है, मीन्स किसी कोर्स का आउटकम नहीं है, ध्यान रखिए, ये ओवरऑल एजुकेशन का आउटकम है। इसलिए मैं अपनी बात को 2 हिस्से में बांट के कहूँगा। और ये 2 हिस्से के बांटना इसलिए ज़रूरी है कि हम जब NEP में आउटकम बेस्ड एजुकेशन की कल्पना करते हैं, और जैसा दुआ ने कहा कि उनको पहले ही बिंदु का इंचार्ज बना दिया गया है, तो ये समस्या उनके पास रहेगी कि उन्हें आउटकम्स निकाल लें और उसके बाद जस्टिफाई करना है कि ये आउटकम्स अचीव हुए हैं, वरना ग्रेड ठीक नहीं मिलेगा। लेकिन वे आउटकम्स, क्या वो आउटकम्स सही अर्थों में अचीवेबल हैं? क्या उनका मेजरमेंट पॉसिबल है? भारत के आउटकम लिखने की एक बड़ी समस्या ये है कि वो नॉन मेजरेबल है। बड़ी संख्या में नॉन मेजरेबल आउटकम्स हम लिखते हैं, गोलमोल। उसके ऊपर भी चर्चा होगी और आगे आने वाले दिनों में, और हम तो सिंह साहब के शरण में बैठ के बहुत सारी चर्चा करेंगे इस बात के ऊपर। पहली बात मैं ये कहना इसलिए चाहूँगा कि
पहली चर्चा हम लोग को जो करनी चाहिए कि एजुकेशन का आउटकम क्या है, और फिर हम बात करेंगे कि एनईपी हमारे प्रोग्राम बेस्ड आउटकम्स की बात करती है, क्योंकि इन दो के बीच में अगर कोरिलेशन नहीं हुआ तो हम डिग्री मिंटिंग सर्टिफिकेट प्रोड्यूसिंग तो संस्था बन पाएंगे, लेकिन हम आउटकम को अचीव कर पाने वाली संस्था बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इस पर प्रश्न चिन्ह बने रहेंगे, हमारे अपने प्रश्न बने रहेंगे। हमारी सफलता आंकी जाएगी कि हमारे डॉक्यूमेंटेशन में कितनी ताकत है, लेकिन हम अपनी सफलता को खुद कैसे आंकेंगे, ये हमारे ऊपर एक क्वेश्चन चिन्ह बना रहेगा। क्या हम सच्चे अर्थों में ये तय कर सकते हैं कि एक प्रोग्राम का हर बच्चे के ऊपर एक ही आउटकम होगा? तो फिर तो हमने विधाता की रचना में ही प्रश्न चिन्ह उठा दिया कि विधाता ने हर एक को यूनिक बनाया था, हम सबको सामान्य कर रहे। क्या ये हो सकता है? एक ही पढ़ाई करने के बाद विश्वेश्वरैया बन गए और बहुत सारे इंजीनियर्स अभी भी रास्ता ढूंढ रहे हैं। अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चोपड़े सर, वहाँ का पढ़ा हुआ एक बच्चा आज वैज्ञानिक है और एक ज्योतिषी है, दोनों इंजीनियर हैं, एक ही कोर्स किए थे, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स। आईआईटी कानपुर के दो प्रोडक्ट आज साधु हैं, भारत के मशहूर संत हैं, उनके साथ पढ़ा हुआ मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, वो गैस सप्लाई कर रहे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं। कैन आउटकम्स बी प्रेडिक्टेड लाइक दैट? Should outcomes be predicted like that? Shouldn't be there some scope left for igniting the minds of people and letting it work the way it can? इन सब प्रश्नों के ऊपर गंभीर चिंतन मैं इसलिए कहूँगा कि 2020 की एनईपी को इम्प्लीमेंट करने की आपाधापी में एक अजीब सी रैट रेस चल रही है। मैं 4 राज्यों में जा चुका हूँ, 4 यूनिवर्सिटीज़ में 4 जगह ये प्रेजेंटेशन किया गया कि हम देश के पहले हैं एनईपी इम्प्लीमेंट करने वाले। तो मैंने कहा दूसरा कौन है फिर? चारों पहले हैं। पहले होना इंपॉर्टेंट है क्या, या सफल होना इंपॉर्टेंट? क्या हमने वो पैराडाइम शिफ्ट की तरफ पहले 2 कदम बढ़ा लिए हैं जिसकी परिकल्पना एनईपी 2020 हमसे करता है? ये ध्यान रखिए कि NEP 2020 इज द फर्स्ट पॉलिसी ऑफ इट्स काइंड। एजुकेशन पॉलिसीज बहुत बनी हैं, लेकिन NEP जैसी पॉलिसी इस देश में रेयर बनी है जिन्होंने इतना बड़ी संख्या में मंथन किया हो। 2.5 वर्ष के लगातार मंथन के बाद ऐसी पॉलिसी बनी है, ऐसे लोगों द्वारा बनी है। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की क्या इतनी जल्दी है? वो खुद नहीं कहता इम्प्लीमेंट करने की जल्दीबाजी। वहाँ पे सारी प्रिकॉशन दिए हुए हैं कि पहले NCERT सिलेबस डेवलप करेगा, फिर पाठ्य पुस्तकें डेवलप करेगा, उसके लिए टाइम फ्रेम दे दिया। फिर उसने कहा कि आप ट्रांसलेशन और ट्रांसलिटरेशन के ऊपर काम करेंगे, टाइम फ्रेम दे दिया। फिर उसके बाद आप अपने कोर्सेज को रीडिज़ाइन करने लगेंगे, टाइम फ्रेम दे दिया। ये पूरी पॉलिसी इम्प्लीमेंट 2047 तक होती रहेगी, और यदि हम 2047 तक इस पॉलिसी से वो सारे के सारे प्रतिफल निकाल पाए जिसकी परिकल्पना NEP करती थी, तो हम सक्सेसफुल होंगे। ये पहले दूसरे की रेस हमें सारे वही कन्फ्यूजन पैदा करेंगे जो नीरज को और भी हैं कि CVCS वाला देखूं, पुराना वाला देखूं कि NEP वाला देखूं, कौन से कोर्स में कौन लड़का पढ़ रहा है और वो क्या पढ़ रहा है ये देखूं, रिजल्ट सबके एक ही आ रहे हैं। तो यदि परिणाम अपेक्षित नहीं है तो आउटकम गलत हुआ ना। फिर प्रोसेस इज नॉट इंपॉर्टेंट, आउटकम इज इंपॉर्टेंट। आउटकम को प्राप्त करने की प्रोसेस है जिसे हम धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप करेंगे। और उस प्रोसेस में पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विल यू लेट द चाइल्ड ग्रूम? क्या बच्चे को खिलने का मौका मिलेगा? क्या हम NEP में सेमेस्टर मिलाकर असेसमेंट की जगह एग्जामिनेशन को डालकर एक ऐसे जंजाल में तो नहीं फंस रहे हैं जहां हम सिर्फ एग्जाम ले रहे हैं? मुझे परसों उच्च शिक्षा विभाग के एक बड़े अधिकारी मिले
ऐसी एक सेमिनार थी और धीरे से कान ने बोले, सर ये जो कंटिन्यूअल असेसमेंट है इसमें क्या करेंगे? तो मैंने कहा आप तो पहले हैं, आप तो कर चुके। बोले सर उससे ये कंफ्यूजन हो रहा है कि साल भर सिर्फ इम्तिहान हो रहे हैं। मैंने कहा एनईपी तो कहता है एग्जाम होना ही नहीं है। एनईपी की जो अवधारणा है वो एग्जाम है ही नहीं, असेसमेंट है। असेसमेंट करने में मेहनत टीचर को करनी है, बच्चे को नहीं करनी है। बच्चे को तो सामान्य रहना है, साधारण रहना है, सोचना है, काम करते रहना है, साल भर करना है, इंटरेक्ट करना है, प्रोड्यूस करना है, सब काम साल भर करेगा। साल भर के अंत में आप कह देंगे ये बच्चा ऐसा था। आपके पास असेसमेंट करने के तमाम सारे टूल्स अवेलेबल हैं और वो कंटिन्यूअल है, लगातार है, पैरेलल है टू द एजुकेशन सिस्टम। लेकिन एग्जामिनेशन है, वो एक दूसरा खेल है। तो दोनों को मिला दिया हमने, जबरदस्ती मिलाया, क्योंकि एनईपी में परिकल्पना नहीं है इसकी। So the outcome will be assessed by examination result. Can outcome be फिर हमने आउटपुट हुआ ना, फिर आउटकम कैसे हुआ? और यही कल्पना है कि आउटपुट बेस्ड नहीं रहना है, आउटकम बेस्ड होना है। आउटकम कैन नॉट बी जज्ड इंस्टेंटली। आउटकम नीड्स टू बी जज्ड थ्रू ए प्रोसेस। तो क्या हमारा इंस्टीट्यूशन उस प्रोसेस को अलाउ कर रहा है, where the child is able to innovate, do something, think about, discuss, interact and then come out with something. इसलिए मैंने कहा कि पहली बात, 2-3 इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, जरूर समझने योग्य हैं, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो समर साल्ट हमको करना है, शीर्षासन, वो शीर्षासन के लिए ज़रूरी है कि हमारी समझ में वो शीर्षासन आना शुरू हो कि हम कहाँ गड़बड़ हो चुके हैं। अगर स्वामी विवेकानंद का नाम मैं लूँ तो उन्होंने कहा था शिक्षा का उद्देश्य क्या है। उन्होंने कहा था कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इंपॉर्टेंट शब्द है अंतर्निहित पूर्णता। अंदर से आप कंप्लीट हो, उसको एक्सप्रेस बाहर कर पाओ, ये क्षमता जो विकसित कर दे संस्था, वो सच्ची शिक्षा है। महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने कहा कि मेरा शिक्षा से तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है, रिजल्ट से नहीं है, डेवलपमेंट से। जॉन ड्यूई की बहुत अच्छी एक डेफिनेशन है, शिक्षा व्यक्ति की उन सभी भीतरी शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण कर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सके। यहां भी भीतरी है। सो द इनपुट्स ऑफ एजुकेशन, जिदु कृष्णमूर्ति का बहुत अच्छा है, शिक्षा व्यक्ति के समन्वित विकास की प्रक्रिया है, एंड नहीं है, प्रक्रिया, प्रोसेस। तो इन सभी, अगर आप डेफिनेशंस के आस पे जाएं तो शिक्षा कहीं पर इस प्रकार का विचार नहीं है जिसमें एक स्पेसिफिक आउटकम को मेजर करके व्यक्ति को शिक्षित माना जा सके। तो 3 शब्दावलियां ऐसी हैं जो कि आज की शिक्षा व्यवस्था के अंदर बहुत पॉपुलर जरूर हैं, लेकिन यह स्पष्टता से मानना चाहिए कि वह संभव नहीं है, न संभव होनी चाहिए। पहली बात, कैपेसिटी बिल्डिंग। योगेंद्र भाई मेरी बात को समझ रहे होंगे, ये सब टेक्नोलॉजी बड़ी इस्तेमाल हो रही है। ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, ये शब्दावलियां ये हमारे यहाँ लाई गई हैं, डेलिबरेटली लाई गई हैं। दे आर वेस्ट ओरिएंटेड terminologies which have been implanted on the education system. ये बिलीफ ही गलत है कि मैन कैन बी ट्रेंड। ये गलत है, फंडामेंटली रॉन्ग है। यू कांट ट्रेन अ मैन। ट्रेनिंग उनकी संभव होती है जो एक जैसे होते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, इनके पास दिमाग नहीं होता, वो ट्रेन होते हैं, जानवर ट्रेन होते हैं, क्योंकि उनकी
आपके स्टिमुलस का रिस्पांस आप एस्टिमेट कर सकते हैं। वहाँ पर आपकी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ज़्यादा अच्छी चलती है कि अगर कुत्ते को थप्पड़ मारा तो उसके 2 या 3 रिस्पांस होंगे, मेजर कर सकते। बट आदमी को मारा 100 क्वेश्चन खड़े हो जाएंगे। वो कौन था, क्या उम्र थी, नीरज जैसा था या हैदर जैसा था, एज क्या थी, बच्चा था, बूढ़ा था, लड़का था, लड़की थी। अभी तो यही तय नहीं हो रहा है कि ये कौन था, फिर उसके रिस्पांस क्या होंगे, इनन्यूमरेबल। सो मैन कैन बी ट्रेन ओनली व्हेन यू रिड्यूस हिज कैपेसिटी, यू कैन नॉट एनहांस हिज कैपेसिटी एंड ट्रेन, पॉसिबल नहीं। एजुकेशन इज टू लिबरेट यू, सा विद्या या विमुक्ते। इट गिव्स यू एन होराइजन टू थिंक अबाउट। पूरा अनंत संसार जब खुल जाए आपकी आंखों के सामने तो शिक्षा हुई। ये चैलेंज है, मैं इसलिए आपके सामने लाया। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि NEP 2020 में ये सब ले आओ। NEP 2020 आ चुकी है, नोटिफाई हो चुकी है और उसका इम्प्लीमेंटेशन अपनी अपनी प्रक्रिया में है। लेकिन जो सुविधाएं हमें हैं, जो सोच हमें डेवलप करनी है, उसे हम NEP में कैसे बिल्ट इन करें, ये इम्पॉर्टेंट है। हम बांधे नहीं। जब हम शिक्षा के उद्देश्यों को बांधने की कोशिश करेंगे, शिक्षा अपने उद्देश्यों के पास भी नहीं पहुंचेगी। कैन वी प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एवरीबॉडी? इज इट पॉसिबल? पवार साहब, इज इट पॉसिबल टू प्रोवाइड सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स टू एवरीबॉडी और द एंटायर बैच? IIM से एक बैच निकलता है, किसी को 4 करोड़ मिलता है, किसी को 2 करोड़ मिलता है, किसी को 20 लाख मिलता है, किसी को 10 लाख मिलता है। सारों के पास वही डिग्री है। इस पर क्यों नहीं चिंतन हुआ? तो क्या कहा जाए, दे वर नॉट एबल टू अचीव देयर आउटकम्स। वो अचीवेबल होते ही नहीं है। द आउटकम इज टू एनहांस द कैपेसिटी इनसाइड यू टू बिकम अ कैपेबल पर्सन एंड देन जॉब विल बी सर्चिंग यू। आपने हर साल पढ़ा होगा कि IIM IIT के एक 20% बच्चे दे रिफ्यूज टू टेक अ जॉब, मना कर देते हैं, हम जॉब नहीं करेंगे, हम अपना काम करेंगे। क्या करेंगे अभी हमने सोचा नहीं, बट हम 100% श्योर है कि हम कुछ करेंगे। वेरी क्लियर, क्लैरिटी ये आ गई है कि हम जॉब नहीं करेंगे, क्लैरिटी ये आ गई है कि हम समाज के लिए कुछ करेंगे, क्लैरिटी ये भी कुछ बच्चों को आ जाती है कि हम वही काम करेंगे जो परंपरा से हमारे यहाँ हो रहा था, बस उसे वैल्यू एडिशन कर देंगे, उसको कुछ शिफ्ट करेंगे, चेंज करेंगे, लेकिन हम अपने परंपरागत काम को छोड़कर बहुत सुखी नहीं हो पाएंगे। बैंगलोर के एक वेजिटेबल वेंडर का लड़का IIM लखनऊ से पास हुआ और उसने तय किया कि मैं सब्जी बेचने वाले अपने पिता की दुकान को ये कहकर छोटा नहीं कर सकता कि तुम छोटा काम कर रहे थे, मैं कुछ बड़ा करूंगा, नहीं, मुझे इसी काम को बड़ा कर देना है। और आज रेफ्रिजरेटेड सिस्टम ऑफ वेजिटेबल वेंडिंग मशीन डेवलप करके आज उसने उस व्यवसाय को करोड़ों का बना दिया। लेकिन उसने अपने पिता को यह नहीं कहा कि अब तुम काम नहीं करोगे, क्योंकि सब्जी बेचना छोटा काम है, सब्जी बेचने को ही बड़ा काम करो। आपके अपने शहर में एक दुकान है जिसको 56 भोग कहते हैं। हम में से लगता है कि सबने मिठाई खाई होगी, पीछे आई और बच्ची के मुंह में तुरंत आगे मुस्कान कि मेरे मुंह में आ गया वो पानी, 56 भोग की मिठाई का। 56 भोग इस शहर की पुरानी दुकान। उसके दोनों बच्चे विदेश से MBA, अमेरिका से अच्छे संस्थाओं से MBA, उनके पास भी तमाम जॉब ऑफर थे। उन्होंने कहा नहीं, मन तो ये करता है कि इसी मिठाई की दुकान को कुछ ऐसा कर देते हैं कि हमारे पूर्वज भी हमारे ऊपर गर्व कर सके कि हम मिठाई की दुकान होल्ड करते हैं, लेकिन वो मिठाई की दुकान जिसकी मिठाई खाने के लिए आपको अब तो सोचना ही पड़ता है कि 56 भोग की खा भी सकते हैं कि नहीं खा सकते। रत्ती लाली ठीक है, सस्ता है। और आपको यह जानकर शायद जानकारी हो या नहीं हो, मैं नहीं कह सकता, इंडिया की पहली 9001 सर्टिफाइड मिठाई शॉप बनी 56 भोग। प्रोसेस कंट्रोल्ड, क्वालिटी इंश्योर्ड, और वो ऐसी शॉप बनी कि आज 150 कंट्रीज में वो सप्लाई करता है। तो ये क्या किसी ने आउटकम सोचा था?
क्या उस MBA प्रोग्राम के आउटकम में ये था कि ये मिठाई की दुकान चलाएगा? नहीं। Therefore, assessment of outcome should not be fixed on certain terms, but एक आउटकम अवश्य होना चाहिए कि हाँ, हमने अपने 500 बच्चों में से 500 बच्चों को सशक्त और संबल बना दिया कि वे वो कर सके जो वो करना चाहते थे। जो आप करना चाहते थे वो कर सके, ये सबसे बड़ा आउटकम है। जो हम कराना चाहते थे वो हम आपसे करा सके, ये दूसरा आउटकम है। और तीसरा आउटकम ये है कि हमने आपको डिग्री दी, गो एंड बी हैप्पी। सोसाइटी में दिखाओ ये डिग्री है, लेकिन काम कुछ नहीं आती। ये डीलिंग्स हैं। बड़ी संख्या में IIM और IIT करने वाले ग्रेजुएट्स जिनके ऊपर सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है, वो सिविल सर्विसेज में बैठ जाते हैं और सिविल सर्वेंट हो जाते हैं। क्या सिविल सर्विसेज का रूट होना चाहिए ऐसा? क्या IIT का आउटकम ये है? क्या उन्हें किसी प्रोग्राम में आउटकम लिखा है कि उनके 20% बच्चे सिविल सर्वेंट बनेंगे देश के? नहीं। वो तो वैज्ञानिक बना रहे थे आपको, पैसा खर्च कर रहे थे, लैब्स ले रहे थे। तो 20% तो चले गए सिविल सर्विसेज में, 4-5 बाबा बन गए, उनको इतना ज्ञान हो गया। तो should we say that the IIT has failed to achieve its outcomes? Have they? I would say no. They have let you blossom into your achieving yourself. और यही सक्सेस है किसी भी शिक्षण संस्था की, कि आप अपने आउटकम्स को रियलिस्टिक, होलिस्टिक, सस्टेनेबल और जीवन जीने योग्य बनाने की कोशिश करें। हम अपने आउटकम्स को इस प्रकार रिवाइज करने की कोशिश अवश्य करें, जिससे हम ये जान सकें कि हमारे बच्चे ने क्या अचीव किया है, और जो उसने अचीव किया है उसे हम आउटकम में कैसे इम्बाइब कर सकते हैं। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो। आउटकम्स कैनॉट बी फिक्स्ड, बट दे कैन बी मेजर्ड, एंड द मेजरमेंट ऑफ आउटकम शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ। आपने नोटिस किया होगा, चोपड़े सर हमारे इसीलिए आदर्श माने जाते हैं, सारे बड़े वैज्ञानिक टॉपर्स नहीं थे, टॉपर सिर्फ पढ़ते थे। सारे बड़े वैज्ञानिक अपने पास इतना समय रखते थे कि वो सोच सकें कि ये समस्या का निदान क्या है। निदान के लिए सोचें, क्लास में टॉप करने के लिए नहीं। तो नैदानिक व्यवस्था को सोचने वाला व्यक्ति वैज्ञानिक बन जाता है, और जो दिया जा रहा है उसको प्राप्त करके यथावत प्रोड्यूस करके बच्चा टॉप कर जाता है। और फिर इसी किसी में कहीं पर क्लैश होता है, इंटरेस्ट उसके दिमाग में आता है, तो वो अपनी दिशाएं बदलता है। अभी शिक्षा विभाग में ही, शिक्षा मंत्रालय में ही जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं, नाम नहीं बताऊंगा, but आप जानते हैं नाम बताना ठीक भी नहीं होता, उनके ही बैचमेट हैं जो कि बाबा हुए, साथ साथ पढ़े दोनों। बाद में उन्होंने कहा कि ये जो बाबा हो गया, तो मुझे लगा कि इसके पास ज़्यादा बताने को हो गया है मेरे मुकाबले। मैं बैच का टॉपर, मैं IAS, मैं आज सेक्रेटरी की पोजीशन पे आ गया, लेकिन वो जो बता जाता है वो हम सोच नहीं पाते। एक ही क्लास पढ़ेंगे। इस सोच को क्लास के अंदर भी विकसित होने देना चाहिए। दैट इज योर आउटकम, दैट द पीपल्स माइंड इज लिबरेटेड इनफ, that they are thinking in terms of diagnosis, they are thinking in terms of treatments, अगर मेडिकल की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करें तो, वे समाधान की तरफ सोच रहे हों, वे मूल समस्या की ओर सोच रहे हों, वे निदान की ओर सोच रहे हों, वही क्लास के लोग हो सकते हैं। कुछ लोग नहीं सोच रहे होंगे, वो टॉप कर जाएंगे, हो सकता है। तो ये एक से इस चिंतन को मैं ये कहता हूँ कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन के जो हम लोगों को माइंड यार्डस्टिक्स दिए गए हैं, हमको उनके मेजरमेंट के लिए अपने टूल्स को डेवलप करने की आवश्यकता है। वो फ्रीडम है आपको।
वो फ्रीडम आपको है कि हम उसके टूल्स कैसे मेजर करें। मैं NAC में जब जाता हूँ तो गढ़चिरौली के एक सुदूर गांव में जंगलों के बीच खुले हुए एक महिला महाविद्यालय का मैं सर्वे करने गया। मुझे पहली बार अफसोस हुआ कि NAC उनसे ये पूछ रहा है कि आपके यहाँ का सोशल डिस्पर्शन क्या है। मुझे तकलीफ हुई इस प्रश्न से कि उस जगह पर जिसके आसपास के 30 किलोमीटर में हर 6 महीने में ब्लास्ट होता हो, वहाँ के उस ट्राइबल इलाके की लड़कियाँ 15-15 किलोमीटर साइकिल चलाकर उस महाविद्यालय में पढ़ने आती हों, और वो महाविद्यालय बगैर प्रॉफिट की सोचे हुए उन्हें पढ़ा रहा हो, उसे अपने सोशल डिस्पर्सन का क्वेश्चन देना पड़ेगा, वरना उसको नंबर नहीं मिलेंगे। तो मैंने NAC में ये पूछा, मैंने कहा कि वहाँ आप कभी गए हो? नहीं। मैंने कहा आपके यहाँ से कोई गया है? कोई नहीं गया है। मैंने कहा वहाँ बच्चे आ रहे हैं, यही चमत्कार है। एक प्रश्न को मेजर करने के तरीके बदलो। तो मैंने एक आइडिया इनको दिया कि आप राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालयों को दी जाने वाली स्वायत्तता को एक अंक मानो, एक वैल्यू दो, और उस वैल्यू के सापेक्ष जब NAC का पूरा मूल्यांकन कर सको तो उसको मल्टीप्लाई करो। जिस राज्य ने पूरी ऑटोनॉमी दे रखी हो वहां परफॉर्मेंस इतनी है, और जिस राज्य ने कोई ऑटोनॉमी ना दी हो वहां परफॉर्मेंस इतनी है कि दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते। तो इक्वेट करने की जो प्रक्रिया है ना, वहां पर कॉन्शियस माइंड का काम आता है, एंड दैट शुड बी द मेजरेबल फिनोमिना फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द आउटकम एंड व्हाट शुड बी द आउटकम। और हमारे आउटकम, एक्सपेक्टेड आउटकम जो हमने सोचे हुए हैं और जो आउटकम में प्राप्त हो रहे हैं, क्या उन्हें हम एज इट इज सोच लें, या उनमें हम, जिसको हम कहते हैं फिनोमिनोलॉजी, सोचें, एप्लीकेशन ऑफ माइंड करें, और तब देखें कि क्या इससे बच्चे का क्या लाभ हुआ है, समाज का क्या लाभ हुआ है, देश का क्या लाभ हुआ है, और वो शायद बड़ा आउटकम होगा बनिस्बत हमारे अपने प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स के। एंड दैट इज द वे द टीचिंग कम्युनिटी शुड बी थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग NEP holistically and in a way that will make you the Vishwaguru, not by making you say that अब हमारा GR 50 हो गया, GR 60 हो गया, we are at par with America. No, we are not. 20 लाख पासपोर्ट सरेंडर हुए हैं भारत में पिछले 8 सालों में, और उसमें से 10 लाख पासपोर्ट्स स्टूडेंट्स के हैं, और वो इसलिए हैं कि they are finding the other system of education liberal enough, which is letting them do what they want to do. They are not chaining them. And that is the reason where we have to think and apply our minds within the community, within the science. Don't wait for the government to say. Government कभी कुछ नहीं कहती, कायदे का तो कभी नहीं कहती, so ये आपको ही करना है। So you have to apply your mind to understand the phenomena, make yourself a responsible citizen, and let the next generation enjoy the benefits of NEP-2020 in true sense, and not be chained in the same way as it was under the 1986 policy. Thank you very much, ladies and gentlemen, for giving me this opportunity. Thank you, Dr. MD Singh. Thank you. थैंक यू सर। आपने अपनी स्पीच शुरू होने से पहले कहा था कि आप अभी NEP 2020 को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, और उसके बाद इन 10-15 मिनट में आपने हमारे समक्ष इतनी सरलता से इसकी पूरी परिकल्पना रख दी है, प्रस्तुत कर दी है। मैं समझती हूँ कि यही एक सच्चे रिसर्चर की पहचान है कि वो हमेशा ये सोचे कि उसे कुछ नहीं आता है और फिर उसको इंटरनेशनल और नेशनल लेवल सेमिनार्स में एज की नोट स्पीकर इनवाइट किया जाए। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। Sir, as you rightly pointed out, that outcomes cannot be fixed and they need to be kept flexible. Their measurement should be kept flexible so that it incorporates students' abilities and all level of students, all background. Albert Einstein ने बहुत पहले ही कह दिया था कि not everything that can be counted counts and not everything that counts can be counted. I think we need to acknowledge these gray areas before proceeding for the implementation of NEP. Moving on very quickly, we have amongst us Professor Arvind Dikshit, who is the ex-Vice Chancellor, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. Of course, he has also been the member of UP Secondary Education Service Selection.
While his vice chancellorship, he has taken some extremely bold steps in terms of quality enhancement of the university, which was accredited by NAC with B++ after a gap of 13 years. I request all the audience to please give a huge round of applause to welcome sir. He is also the chairman of the NAC Committee for Accreditation of Councils. He has worked as a search committee member for selection of vice chancellors across the state universities, and he has been playing an important role in the implementation of Common Syllabus Preparation Committee. Apart from this, he has also been the sectional president of 103rd Indian Science Congress Association in Kolkata, and has supervised, of course, that doesn't need to be mentioned, but in his rich and illustrious career as an academician, he has guided, supervised lots of PhD students and has published papers of national and international repute. Sir, we welcome you onto the dais, onto the podium to interact with the audience. Please give a huge round of applause to welcome sir. दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के अवसर पर उपस्थित सौम्यता की प्रतिमूर्ति इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र बहादुर सिंह जी, प्रोफेसर B.A. चोपड़े मुख्य अतिथि इस गोष्ठी, और अभी जिनका विद्वतापूर्ण तात्विक विषय ऐसे हमारे बंधु प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी, इसके कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर सैयद हैदर अली जी, सब उपस्थित देश भर से आए विद्वान बंधु भगिनी और प्रिय छात्र छात्राओं, पत्रकार छायाकार मित्रों, अभी मनोज जी ने एक तात्विक विषय रखा, अभी प्रोफेसर B.A. चोपड़े जी का भी तात्विक विषय होने वाला है, तो ये हमारे बच्चों के लिए थोड़ा गंभीर हो जाएगा, तो मैं हल्केपन से व्यवहारिक विषय आपके बीच में लोने आया, बैठे बैठे कुछ चीजें ध्यान में आई, इसी की चर्चा करें। जो आउट को है नई शिक्षा नीति के, उसके संबंध में जो चर्चा हो रही है, मैं केमिस्ट्री का विद्यार्थी हूं, मेरी शिक्षा का एक आउटकम है कि घर में जो सरसों का तेल है, इसमें अगर कोई मिलावट है राइस ब्रान ऑयल की, तो हम उसको कहते हैं कि सस्पेक्टेड ऑयल ले लीजिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ उसका ट्रीटमेंट करिए, आपको उसका येलो कलर का प्रेसिपिटेशन अगर आता है तो आप ये कह सकते हैं सरसों के तेल में राइस ब्रान ऑयल की मिलावट है। ये एक मेरा आउटकम है। और दूसरा आउटकम क्या है कि मैं आपको ये कहने वाला हूं कि 200 लीटर राइस ब्रान ऑयल ले लीजिए, कितना 200 लीटर, उसमें 50 ml एलाइल आइसोथायोसाइनेट और 50 ml कोई भी ऑयल सॉल्युबल एजोडाई ले लीजिए और इनको मिला के उसको हिला दीजिए, तो 200 लीटर राइस ब्रान ऑयल आपको सरसों के तेल की पूरी महक देने वाला है। ये है हमारा आउटकम, ये आउटकम है। अब कौन सा लेना है और कौन सा नहीं लेना है, ये हम जो सामने बैठे हैं ये इनको तय करना है। ये विषय आया कहां कि जो नई शिक्षा नीति के संबंध में हम कहते हैं कि हम अपने भारतीय संस्कृति उसको भी लेकर के नई शिक्षा नीति में चलने वाले हैं। आउटकम हमको क्या चाहिए, पूरे विश्व का कल्याण, विश्व मंगल की कामना से हमारी ये नीति बन रही है। मुझको मौका मिला, मैं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय घूमने के लिए गया एक एजुकेशनल डेलीगेशन के साथ में। कैम्ब्रिज के चारों ओर
एक कैनाल जैसी है, एक विद्यार्थी नाव चला करके हमको लेकर के जा रहा था, बताता भी था। उससे परिचय किया तो जानकारी मिली कि वो केमिस्ट्री में रिसर्च करने वाला विद्यार्थी है। कुछ आदत है पूछने की, तो मैंने उससे प्रश्न किया उतरने के बाद कि आप तो रिसर्च स्कॉलर हैं, आप ये काम क्यों कर रहे हैं? उसने मुझको दिया कि सर मैं इससे फिजिकली फिट भी रहता हूं और कुछ अपनी अर्निंग होती। आगे बढ़ते हैं, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पुस्तकालय वगैरह देखे तो देखा कि वो अपने वैज्ञानिक इनको सबके उनके छोटे छोटे बस्ट सम्मानित तरीके से उनके लगे हुए हैं। और हमको एक कमरा दिखाया कि सर आइजैक न्यूटन इसी कमरे से बैठ करके, ये जो खिड़की के सामने आप एप्पल का ट्री देख रहे हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी का इन्होंने इन्वेंशन किया था, सर आइजैक न्यूटन ने। अपनी थोड़ी मजाक करने की आदत है। मैंने कहा सर हाउ यू मेंटेन द थिकनेस ऑफ द एप्पल ट्री। मैंने पूछा कि इसकी आप ये थिकनेस क्यों? सर आइजैक न्यूटन का कालखंड पहले का है और आज के दिन इसकी थिकनेस तो कम है, क्या करते हैं? उन्होंने कहा सर इट इज ए सिंबॉलिक। मेरे मन में एक तुरंत बात आई कि ये अपनी चीजों को सिंबॉलिक तरीके से लेकर के चलते हैं। यहां जो बैठे हुए विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि न्यूटन के साथ अगर हम कई चीजें जुड़ी हैं, डॉक्टर साहब चोपड़े जी बताएंगे कि हमारे किसी बच्चे से पूछिए हु इज फादर ऑफ कैलकुलस, तो न्यूटन और लाइबनीज का नाम लेकर के वो बताएगा कि ये कैलकुलस के फादर। यानी किसी ग्रह की गति और उसकी स्थिति की जो गणना करते हैं वो हम कैलकुलस के इस्तेमाल से करते हैं। मेरे को ध्यान में आया कि कल आने वाला जो है ये वर्ष प्रतिपदा है, भारतीय नव वर्ष का प्रारंभ। आप यहां किसी के पास चले जाएं, कोई काशी का विद्वान एक अपना जो पत्रा है उसको निकाल के कहेगा कि अगला सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कब होने वाला है। आज के 1000, 2000, 10,000 साल पहले भी कब हुआ है, आगे कब है। तो मेरे मन में सवाल आता है कि जो काशी के विद्वान पत्रा में लिखते हैं किसी ग्रह की गति और उसकी स्थिति, उसका तो वो गणना करके दे रहे हैं, तो भाई फादर ऑफ कैलकुलस न्यूटन और लाइबनीज कहां से हो गए, ये मन में सवाल आता है। दूसरा, अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी का जर्नल निकलता है, उसमें भारतीय अंकों की जो विश्व यात्रा है उसकी कहानी सुनाता हूं। 7वीं शताब्दी में अरब के खलीफा के द्वारा एक हिंदू विद्वान कंक आमंत्रित किया जाता है, संभवतः केरल के ही वो जाकर के अरब के लोगों को मैथमेटिक्स सिखाते हैं, अंक सिखाते हैं। तो जो हमारे अंक दार्शनिक प्रणाली 1, 2, 3, 4 ये जो अंक हैं अरब में इसको बोलते हैं हिंदजा या हिंदसा, हिंदुस्तान से आया हुआ। और यही अरब से जब यूरोप गए अंक, तो यूरोपियंस इनको अरेबिक न्यूमरल्स कह करके इनका वर्णन करते हैं। दुर्भाग्य से हम यूरोपियन के गुलाम हुए और हम अपने बच्चों को अपने द्वारा इजाद पद्धति, अंक पद्धति को अरेबिक न्यूमरल्स करके पढ़ाते हैं। यह है ये आपके जानकारी का, और हमने उसको तब तक नहीं माना जब तक अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी के जर्नल में वो चीज प्रकाशित नहीं होती। अपने संबंध, दिल्ली जाइए, मेहरौली में जाएं, एक लौह स्तंभ है, कहते हैं 16वीं शताब्दी का, उस पर रस्टिंग और डिकेइंग नहीं हो रही है,
उसमें जंग नहीं लग रहा। जब उसका एलिमेंटल एनालिसिस होता है तो उसके अंदर कार्बन है, आपका आयरन है, लेकिन मैग्नीज की परसेंटेज नील है और फास्फोरस की प्रेजेंस है। लेकिन हमने उसको तब तक नहीं माना जब तक डीआरडीओ या आईएससी बंगलौर ने पेपर छाप करके उस चीज को नहीं किया। तो हमारा अपने बच्चों से कहना है कि जो ऐसी चीजें हैं कि हम करते थे, और कभी कभी ये सब मैनेजमेंट के लोग हैं। हैदर साहब तो कहेंगे कि भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत मेरी क्या अर्निंग हो रही है, ये आउटकम आउटपुट चाहिए। मित्रों, अपने देश में हमने जो काम किया है वह विश्व मंगल की कामना से किया है। न हम प्रोसेस पेटेंट के लिए गए और न प्रोडक्ट पेटेंट के लिए गए। किसके लिए गए? सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व मंगल कामना, इसके निमित्त हम काम करने वाले हैं। अन्यथा शून्य का आविष्कार, पाई का मान, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी अगर हम रॉयल्टी मांगते तो क्या होता। ये हम कहाँ है? भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी गुरुकुल पद्धति थी, आश्रम की व्यवस्था। आश्रम के छात्र बाहर से जाकर के भिक्षाटन करते थे और भिक्षा में जो मिला वो बिना किसी राजाश्रय, बिना किसी राजसत्ता के वो व्यवस्थाएं हमारी चलती रही। और उन्हीं से जो हमने काम किया कि हमने कहा कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्युत धर्म। जो कुछ भी है ये परमात्मा का है, हम इसके ट्रस्टी हैं। त्याग पूर्वक उपयोग, अपने लिए जितनी आवश्यकता कम से कम रखेंगे, दूसरे के निमित्त की अगर हम सोचेंगे तो हमें फिर एलाइल आइसोथायोसाइनेट का इस्तेमाल करके राइस ब्रान ऑयल को सरसों का तेल बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। ये अन्यथा आज पूरा विश्व एक संकट से गुजर रहा है। भारत का ही एक अंग नया राष्ट्र बनता, ये नया देश बनता है। नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। आज आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में $500 बिलियन हैं और उनको $1-2 बिलियन के लिए क्या समझौता करना पड़ता है। लेकिन स्थिति क्यों बनी? उसी पाकिस्तान में एक कमीशन बना था और कमीशन का जो विषय था, ये जो बहुत इस्लामिक विद्वान हैं उनके निमित्त मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये विश्वविद्यालय गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर ये है। तो हम उनसे इंस्पायर होकर के भी हमें काम करना है। तो मैं इन इस्लामिक स्कॉलर्स के बीच में कहता हूं कि वो जो कमीशन बना था उसका विषय था हु इज मुस्लिम, कौन मुस्लिम है। क्योंकि 72 या 73 फिरके एक दूसरे को शायद इस्लाम का अनुयायी नहीं मानते हैं, उनको एक दूसरे को काफिर बोलते हैं। पाकिस्तान का एक नोबल लॉरेट फिजिक्स का व्यक्ति है जिसको नोबल पुरस्कार मिलता है, लेकिन वो अहमदिया मुसलमान होने के नाते इन पाकिस्तान के बंधुओं ने उस नोबल लॉरेट के साथ क्या व्यवहार किया, उसका परिणाम आज $1-2 बिलियन के लिए किसके सामने हाथ फैला रहे हैं। मैं अभी पिछले महीने नैक में गया, बीजापुर कर्नाटक, अंजुमन इस्लामिया आर्ट साइंस कॉलेज में कोएड एजुकेशन और 70% बच्चे इस्लाम के अंग हैं। नैक में एक कल्चरल प्रोग्राम का विषय आता है।
कल्चरल प्रोग्राम हुआ। उसके बाद वो नैक के चेयरमैन को कहते हैं कि सर हमारे बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए कुछ 5-7 मिनट बोल दीजिए। मेरे लिए एक नया अनुभव आया कि सामान्यतया अपने सूफी बंधुओं को छोड़ दीजिए, जो सूफी के अनुयायी हैं उनको अगर माइनस करेंगे तो संगीत और इससे थोड़ा सा अपने को वो अलग रखते हैं। लेकिन वहां पर उन्होंने क्या किया, शिव तांडव नृत्य किया और डमरू के साथ उस बेटी का नृत्य हुआ। तुरंत मुझको ध्यान में आया कि आज जो शिव तांडव, उसी को फिर मैंने विषय शुरू किया। मैंने कहा बच्चों, भारत के अंदर ये संगीत नृत्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं थे, ये शिक्षा के लिए थे। और फिर पता नहीं क्या मेरे ध्यान में आ गया, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचबारम। संस्कृत का है, मैं हिंदी उसको बोलता हूं। माहेश्वर सूत्र का नाम सुना। महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी की रचना करते हैं। उनकी जन्मस्थली आज पाकिस्तान में है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। नटराज ने नृत्य की समाप्ति के ऊपर 14 बार डमरू बनाया। संस्कृत के विद्वानों से पूछिएगा तो जो 14 बार उन्होंने डमरू बजाया तो पहली जो ध्वनि हुई उसको उन्होंने कहा ऐ ऊण। दूसरी ध्वनि हुई उसको कहा रिल रिक, ऐ ओज। ऐसे 14 प्रकार की उन ध्वनियों से 4000 से ज्यादा संस्कृत के उन्होंने सूक्त तैयार किए और सारा व्याकरण संस्कृत का महर्षि पाणिनि ने उन डमरू से दे दिया। तो हमारे यहाँ यदि नृत्य भी है तो उसके अंदर शिक्षा और संस्कार है सारी चीजों के लिए। और कभी भी हम केवल इसकी उपासना नहीं करते हैं कि हम केवल खाली रहें, गेरुए वस्त्र धारण करके हिमालय की कंदराओं में तपस्या करें, केवल इतने नहीं है। हमारा साम्राज्य जो है समाज धन धान्य संपन्न हो। यहां पर एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम है चारवाक। उनका दर्शन भोगवादी दर्शन। उनका कहना है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पे भस्मीभूतस्य देहस्य। वो कहते हैं इसका पुनरागमन होगा नहीं होगा कि नहीं, जो कुछ है खाइए पिए मौज करिए और कितना कर्जा लेकर के भी कर। लेकिन हमने भी उनका दर्शन माना, ये नहीं कहा कि भाई इनकी गर्दन काट दी जाए। गैलीलियो ने कुछ कह दिया था, जो तथाकथित बहुत उदारवादी हैं, उन्होंने गैलीलियो के साथ क्या आचरण व्यवहार किया है। हमारे अपने बच्चों को मैं इसलिए ये सब चीजें बता रहा हूं कि भारत सशक्त होगा, भारत मजबूत होगा तो कोई भी दीनहीन दुखी है उसकी सेवा में जाएगा। तुर्की का उदाहरण हमारे सामने है। हमारे बारे में वो क्या बोलता है वो उनका अपना विषय है। लेकिन यदि तुर्की में संकट आता है तो भारत यदि सक्षम और समर्थ राष्ट्र है तो हम उनकी मदद के लिए जाते हैं। ये भूल करके इन्होंने मेरे लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या कहा है और क्या आगे कहने वाले हैं इसकी चिंता किए बगैर। इसलिए अपने को हमको मजबूत करना है। और क्यों करना है, अंत में एक धर्म के संबंध में बहुत व्याख्या होती है। तो धर्म की परिभाषा धृतिश्च क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। ये जो धर्म के 10 लक्षण बताए गए इसमें कहीं उपासना पद्धति नहीं आई। आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारा गिरजाघर जाएं और कहीं न भी जाएं तब भी आप धार्मिक हैं यदि इन धर्म के 10 लक्षणों का आप आचरण करते हैं। क्या है, जरूरत से ज्यादा संग्रह न करें, चोरी न करें,
दया करें, सुचिता आदि ये जो ऐसे लक्षण हैं, उपासना पद्धति इसमें कहीं भी नहीं आई है। तो भारत एक धर्म सापेक्ष तो हो जाए, ये तो धर्मस ततो जया। धर्म अगर हम अपना कर्तव्य करते हैं तो उसमें आपका अधिकार सुरक्षित है। यहाँ सारा कुछ कंसंट्रेशन अपने कर्तव्य पर है। नई शिक्षा की नीति में एक चीज और जो जोड़ने की है कि जिस विद्यार्थी का मैंने उदाहरण दिया कि वो नाव चला रहा है और अर्निंग करी, लेकिन 1835 में लॉर्ड थॉमस बॉबिंगटन मैकाले ने जो शिक्षा पद्धति दी उसमें हमारे अपने जो मानविंद श्रद्धा के केंद्र, मेरा जितना काम उसको भुला देना और दूसरों के ऊपर आश्रित रहना। जो कोई काम करता है मेहनत का, हम उसको है नीची निगाह से देखते हैं। हम भूल जाते हैं अब्राहम लिंकन ने जब राष्ट्रपति पद की शपथ ली, सीनेट में बोलने के लिए गए, तो कुछ लोगों ने उनको कहा कि भाई इनके पिताजी शू मेकर। अपना संबोधन शुरू करते समय उन्होंने कहा, हाँ मेरे पिताजी जूते बनाते थे, यदि उनके बनाए जूतों में कोई कमी रह गई हो तो मेरा भी थोड़ा बहुत मुझको भी काम आता है, मैं उसको ठीक करूंगा। कर्म को महत्व देने के कारण अमेरिका के अंदर फिर गोल्ड स्मिथ, कारपेंटर, कॉबलर, ये सरनेम प्रचलित हो गए। तो हम अपने कर्म को भी यथावत दें। तो मेरे लगता है अगर आपके मन में हमको शिक्षा क्यों लेनी है, किस निमित्त लेनी है, यदि यह उद्देश्य क्लियर हो गया, आप सब विद्वान हैं। क्योंकि विद्यार्थी एक बीज के समान है, उसको नमी, पानी, वातावरण मिल जाएगा तो उसके अंदर वटवृक्ष बनने के सारे गुण हैं। हमारा आपका काम आपको एटमॉस्फेयर देने का है, हम उसको काम करेंगे तो हमको अपना वांछित मिलेगा। मैं आदरणीय प्रोफेसर NB सिंह जी का, हैदर अली जी का बहुत आभारी हूँ, आपसे संवाद करने का मौका दिया। अगर कोई अच्छी चीज लगती है तो आप साथ में ले जाइए, मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मेरे को यहीं छोड़ते हुए, क्षमा करते हुए अपना कथन समाप्त करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। NEP जैसे एकेडमिकली डेंस सब्जेक्ट को अलग अलग पहलुओं से, अलग अलग सांस्कृतिक पहलुओं से कल्चरली निकालते हुए आपने हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे पार्टिसिपेंट्स को समझाने की कोशिश करी। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। प्रोग्राम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हमारा रुख है प्रोफेसर BA चोपड़े साहब की तरफ। आदरणीय मनोज दीक्षित सर ने इतनी खूबसूरती से हमारे अगले स्पीकर प्रोफेसर BA चोपड़े साहब का तारुफ करा दिया है कि मैं समझती हूँ कि कुछ और कहना बनता नहीं है। लेकिन निज़ामत की तैयारी करते वक्त मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैं सभी स्पीकर्स की नॉर्मली प्रोफाइल ढूंढती हूँ इंटरनेट पे कि मुझे कुछ मिले जिससे मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ साझा कर सकूँ। तो प्रोफेसर BA चोपड़े साहब की प्रोफाइल, संक्षिप्त परिचय जिसे आप कहते हैं ना ब्रीफ प्रोफाइल, वो 7 पन्नों का है। टाइम्स न्यू रोमन, 10 फॉन्ट, सिंगल स्पेसिंग, जस्ट टू बी ऑन द रिकॉर्ड। और एक एक पॉइंट उसमें ऐसा है कि मैं अगर ना बोलूं तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो खुल करके हमारे बच्चों तक नहीं आ पाएगी। खैर, for the sake of time management and for the sake of minimizing the gap between Professor BA Chopde and us, I will just very quickly go through his profile, just a few major points that I want to bring to the attention of the students. Professor BA Chopde is the Vice Chancellor of AKS University, Madhya Pradesh. Of course, he is the MSc PhD from Nottingham University, as has already been mentioned. He is a Fogarty Fellow from Illinois University, Chicago. Apart from that, he has also been a Vice Chancellor of Dr. Baba Saheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad. And he is an outstanding researcher, innovator, academician of international repute. He is a great visionary, institutional builder, research mentor, and a very, very innovative administrator.
skipping through most of the very, very relevant points, he has won a prestigious award for the most influential vice chancellor in India. मैं समझती हूँ हर बात पे आपकी ताली बजती रहनी चाहिए. By World Education Congress, he has won the Higher Education Excellence Award by the World Education Summit. Noteworthily, he has about 120 original research papers to his credit, and a total impact factor of his research is more than 275 with an H index of 31, and his work has been cited more than 2081 times in the ResearchGate score index. His research score is 37.28. So sir, आप इतनी दूर से इतना लंबा सफ़र तय करके मैं समझती हूँ कि आप हमारे साथ आए हैं. नवाब वाजिद अली शाह का एक बहुत मशहूर शेर है कि आए ना मेरे पास तो मैं आप ही चलूँ, आए ना मेरे पास तो मैं आप ही चलूँ, मुझे खुदा करे कभी बुलाए लखनऊ. तो लखनऊ ने आपको बुलाया, आप आए, इसका बहुत शुक्रिया. Honorable Vice Chancellor, Professor N.B. Singh of the KMLC Language University, very eminent academician, eminent professor, my very good, I think, friend, Professor Manoj Dixit ji, a former Vice Chancellor of RML University, Awadh, and Upadhyaksha, Bharatiya Shiksha Mandal, Nagpur. Professor Arvind Dixit, former Vice Chancellor of DBRA University, Agra. Convener Professor Syed Ali Haider Ali from this university. Organizing Secretary. All the heads of departments, professors from all the faculties, and my dear participants. At the beginning, I pay my homage to great Sufi saint of the world, Khwaja Muhammaduddin Chisti, as this university has been named by this great saint. It's my great pleasure to be in this place of this university, who is named after such a greatest Sufi saint in the world. About 8 days back, Professor Manoj Dixit ji called me, and he is Upadhyaksha of the Bharatiya Shiksha Mandal, so we respect him very much. We always follow the orders given by him. And so practical ordered me, sir, you have to come to Lucknow. And I can't say no. In fact, we had lots of, I think, work going there as and newly joined in the university. But sir said that there is a national seminar, I think, and please come to the Lucknow. And instantly, I said that I will certainly come to Lucknow. And we'll have a lot of deliberations, I think, over the 3 days at your university. Friends, today is, I think, the seminar, National Education Policy 2020, with special reference to outcome-based education, is the theme of the conference. And I kept a theme for the 2 days. And if you see the content, I think, of the national seminar, the most of the content consists of national education policy and varying aspects of national education policy 2020. And one of the aspects is, of course, outcome-based education. Now let me tell you, after studying in Great Britain and United States of America, and after serving as a head department of microbiology and director of Institute of Biotechnology in Pune University for 36 years,
And as an active researcher, I have own understanding of national education policy. And I must say that in the last 75 years of independence of India, one of the greatest things which happened in academia is the acceptance of national education policy, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. This is a paradigm shift in Indian education, from primary to the university level education. And I remember 20th of July 2020 is a golden day in our country, because on this day Government of India accepted national education policy, and since last 2 years a lot of work has been going on about national education policy. I gave 150 seminars in various IITs, various central universities, various state universities, various research institutes and colleges about national education policy. And at the same time, we had a large number of workshops, I think, of national education policy throughout the country. And I must tell you, Bharatiya Shiksha Mandal Nagpur has played very pivotal role in the formation of national education policy. And I would say 70% of drafting of national education policy came from the contributions of Bharatiya Shiksha Mandal. In fact, you know that 2020 when it was accepted, but Bharatiya Shiksha Mandal has been working consistently from 2014. Over the last 6 years, we have contributed immensely for developing this draft or all the criteria, all the principles of national education policy. And I must put on record, the concept of establishment of National Research Foundation is a concept, first of all, given by Bharatiya Shiksha Mandal to Government of India, and then accepted by the chairman, I think, of the National Education Policy Draft Committee, headed by former ISRO chairman Professor Kasturi Rangan, and a world famous scientist, mathematician, Professor Manju Bhargava from Princeton University. And I must tell you, the present national education policy is not just a policy made by a committee. It's not just a formality. It's not just a document. I want to tell you, this policy is based on extensive research. I repeat my sentence, extensive research on present education problems in India. Present education problems in Indian education system from nursery to the university level. And from that detailed deliberations, 3.5 years, the work continued. More than 3.70 lakh sessions were, I think, invited by all the academia, vice chancellors, research scientists, professors, academicians, students, even at the level, I think, of the Gram Panchayat, at the block level, sessions invited by the committee. And at the end, I think the draft was formulated. And let me tell you, see, you must remember that what we have been studying from 1947 till, say, for example, 2020, we all have studied the British method of education, a British system of education. But I certainly say, national education policy is the first policy after independence in 75 years. A truly education policy meant for development of Bharat, meant for development of India.
administrate science and technology and knowledge in all branches of knowledge. Along with that, emphasis is given mostly, I think, to the concept of what you call Indian values, Indian culture, and Indian ethos. And that's one of the most important, I think, parameter which we'll have to keep in the mind. And with this perspective, this policy has been formulated. Now, friends, if you see the previous policies from Kothari Commission, 1966, or if you say the National Education Policy 1986 of the then Government of India, which was modified 1992, and various commissions set up, I think, by the Higher Education Commission, by the University Grant Commission, New Delhi, about the national education in general, policy in particular. And many times attempts were made for implementation, I think, of education policy of 1986. And one of the prominent, I think, was that 10 plus 2 plus 3 was the model, which accepted from 1986 onward, which went up to 2020. That was only visible model which could able to see from national education policy. Kothari Commission said, 1906 education policy said, Government of India must spend 6% of GDP in education. All policies are recommended high investment in education sector. But somehow, because our country is growing, because we are newly born a country relatively, and therefore we had different priorities. And somehow we couldn't pay much attention to education. But friends, one thing I want to tell to you. If you see today's picture, according to the Higher Education Survey of India, in 2022, at the moment India had 1143 universities, 44,000 colleges, and 12,750 standalone institutes. And currently, 40 million students, 40 million point 5 students, 40.5 million students are studying in tertiary education, or what you call as higher education. If you see the scenario, I think, of this, I think the numbers, you can see that Indian education system is one of the largest in the world. And certainly as a great nation, as a great country, India is one of the very, I think, a great nation in terms of geography, in terms of number, in terms of population. So obviously these numbers are not enough. But even if you see this large number, what it indicates? These large numbers indicate very clearly that even we have just grown in number, in quality, in quantity. Our growth in education from primary to secondary to college to tertiary to university level is just, I think, quantitative. We are not really bothered, I think, what you call, I think, as a quality education. And I must tell you, in 2015, United Nations, UNESCO, declared one, I think, a world, I think, document called as Sustainable Development Goal, which you abbreviate as SDGs. And there are 17 sustainable goals which are declared by UNESCO. And in that goal, the goal number 4, SDG 4, is a goal of higher education, or education in particular, and that has 10 different indicators. In 10 different indicators of sustainable development goals of education, one of the goal number 4, or one of the indicator is equity, access, equity, and quality education. Now, not only in the universities,
I'm talking right from primary, lower KG to KG to primary, secondary, college and university level. So this kind of the quality education is the need of entire world. And I must tell you, in 2015, India becomes signatory for these United Nations organizations, I think these Sustainable Development Goals. And now by 2030, there is a mandate that every country in the world, I say every country means all countries in the world, they have to contribute and they have to complete all the goals by 2030. In view of the background, Honorable the then Education Minister, Government of India, Smriti Irani, started the first experiment, I think, of developing an education policy. Although we say 2020, it started from that time. And by 2030, we have to show that, I think, yes, we have achieved, I think, this, I think, particular success of education, criteria for quality education in terms of access, equity, and the quality. For all in the country. And from that point of view, emphasis was given, I think, by national education policy that yes, by 2030, we'll able to have these kind of things. We will able to complete our objectives, our goals of SDG 4. This is one of the objectives of national education policy. Now let me tell you one important thing. If you see the world's economies, at the moment, world's largest economy is United States of America, $25.5 trillion. Number 2 economy is $18.5 trillion, China. Number 3 economy in the world is Japan, $5.2 trillion. Number 4 is Germany, $4.1 trillion. And number 5 is $3.52 trillion, Bharat or India. Friends, if you could see this world economy, and at the same time, if you could see that global innovation index, which is published by World Intellectual Property Organization, Switzerland, Geneva, every year they publish this, I think, ranking of universities, ranking of the nations, ranking, I think, of countries, based on research and innovation capacity and its impact on economy. And I'm very happy to tell you, in 2014, India's number was 84 among 180 nations in the world. 2022, November 22, the result has been declared, and India's, I think, number has come 40 in the world. We are now in the top. See, from 84 to 40, in couple of just years, is a progress, I think, made by this. And let me tell you, although we are getting delay for implementation of NEP-2020, but my friends, let me tell you, this is all impact about new national education policy. That I'll tell in my next lecture. Research and innovation in national education policy. It's not just implementation in the universities, but overall developing ecosystem for the knowledge creation, ecosystem for, I think, the research, innovation, entrepreneurship and startups, which has contributed India in the top, I think, 50 countries in the world. And I believe and trust in the next, I think, 5 years, we will be in the top, I think, 20 economies, 20, I think, countries in the terms of innovation and research and entrepreneurship and startups. So this is one of the reasons I must tell you that greatness of any nation depends upon greatness, I think, of knowledge created by the universities. Greatness of any nation depends on greatness of universities. And greatness of universities depend upon knowledge created by professors and research scholars in the universities
and it's a contribution for development of the country and the whole world, whole humanity. And from that perspective, I must tell you, the concept of university was born in India. See, we always say Stanford and Harvard, or Cambridge, I think, and Oxford. But remember, my friends, the concept of university is born in India, not in America, not, I think, in Germany, or not in Great Britain. I must tell you, Indian civilization is 5,000 years old civilization, more than that. And the world's first university, Takshashila, was established 700 BC. And at that time, Takshashila was the greatest center of learning, first university of the world, and students from all over the world, professors, I think, out of the world used to come to the Takshashila, which is now in the near Rawalpindi. And point I want to say to you, Professor Kautil was professor economics in Takshashila University. The concept of medicine, Javak, established in Takshashila University. And all branches of knowledge, engineering, mathematics, philosophy, astronomy, all branches were taught in Takshashila University. 4th century, unfortunately, Takshashila was destroyed by the invaders. 4th century, Nalanda was established. And Nalanda was again the center of excellence in the world, biggest university in the world. You know, meaning of Nalanda, Nalanda is Sanskrit word. Na-lan-da. Na means no. Alad, limit. Da, knowledge. No limit to the knowledge. Knowledge is infinite, I think, in that. Infinite. The meaning of university, infinite knowledge. Point what I want to say, at that time, Europe was barbaric. What you call England, America, Germany, France, or I think all these countries, advanced countries, and they were barbaric. They didn't have, I think, close to wear. Forget, I think, about the housing, I think. At that time, this part of the world, Bharat, was the most glorious, I think, glorious civilization with science and technology and everything, I think. So point what I want to say to you, concept of the university is born in India, developed in India, nurtured in India. Unfortunately, because I think of some foreign invasions, we lost, I think, our universities. That's a different story. But point what I want to say to you, let us keep in the bottom of our heart that we Indians are intellectual. We Indians have infinite capabilities. We Indians have infinite knowledge with us. And with that confidence, with that determination, let us accept National Education Policy 2020. My dear professors, I tell you, I do not know how many of you have read National Education Policy 2020. How many of you have really read, you tell me. And when I mean you read, I don't mean, I think, I read PDF, I think, of the NEP 2020 just once. You must read, I think, again and again and again. How long? At least 10 times. Dissect, analyze a single word, every sentence of NEP 2020. Try to understand meaning of NEP 2020, that's the particular meaning, I think, of the sentence, I think. And when you read it and try to understand, try to interpret it, then you will have the clear understanding of what is NEP 2020 and how you can able to it. My dear professors and my students, particularly professors, remember that we all the professor must owe NEP 2020. I think this is my first criteria for implementation. Believe me that you don't have to wait from circular from IAS officer. We don't have to wait for the orders, I think, from government, I think, any government, state government. Universities are autonomous. And therefore, the vice chancellors of university, deans of universities, heads of departments of universities, all the professors of universities, you must have the brainstorming from time to time regularly.
deliberations NEP 2020. And once you have the clear understanding, I think, of the concept of NEP 2020, particularly in university, say higher education, then the pathway of implementation will become very, very easy. The problem at the moment which I observe in India, most of the universities are waiting from circular from government. In Maharashtra, sir, I always ask many vice chancellors, sir, they say that we are waiting for circular from government of Maharashtra. Okay, when to implement, how to implement? No. Government is not going to tell you how to implement the NEP 2020. It's the universities, I am telling you. And for the purpose, in my next lecture, I will tell you how we are able to go about it, I think. Friends, what I want to tell to you, outcome-based education is one of your theme, I think. But before going to outcome-based education, it's very important to understand that, what is the foundation? What is the foundation, I think, of the NEP 2020? Can anybody tell me in one sentence? Can anybody tell me in one sentence what is the foundation or main principle of NEP 2020? Forget about outcome-based education, forget about choice-based credit system, forget all other things. What is the fundamental principle? Yes? Partly you are okay. Partly correct, not complete. Anybody? Yes? Okay, is one of the, I think, I'll say at the periphery. Okay, you're right, but at the periphery. Anybody? Anybody? Practical education, okay, again at the periphery. You're right, but but see, we must have come to the soul of NEP 2020, the main criteria, the main principle on which the NEP 2020 has been established, I think. Anybody? Anybody? Holistic development, yes, it is one of the principle, I agree. Yeah, but again, not at the periphery, I think, in that. The soul of NEP 2020 is research and innovation. And remember, what we study in the class is from textbooks. NEP 2020 envisions development of scientific temperament among all young students of India, and the professors, and the community, and nation in general. Development of scientific temperament, I think. In my next lecture, I'll tell you what is scientific temperament and what's its relation to the research and innovation, I think. And I must tell you, India is the only country in the world, if you see the Article 51A, Article 51A of Indian Constitution has mentioned every citizen of the India, every citizen of India must develop scientific temperament. And this is only constitution in the whole world which talks about scientific temperament. And therefore, NEP 2020 expect that a total transformation, I think, of education in general from primary to the university level, I think. And from that perspective, we'll have to see the various aspects, I think, of NEP 2020, and then I think we'll come think about, I think, outcome-based education. That I will discuss, I think, in my next coming lecture in detail. What is critical thinking? Why critical thinking? That will be able to come, what are theories, I think, of critical thinking. And ultimately, the question I have to think that how to implement. The major question when I talk to academics in the country, across the country, people think that, I think, financial, I think, constraint is major problem, I think, for implementation of NEP 20. I agree, financial constraint is one of the problem. But that is not only the problem, I think, for the NEP 2020 implementation. The different, I think, aspects of NEP 20 can be implemented very easily. And for that purpose, I sincerely feel that it is the role of the teachers, professors, I think, to owe NEP 2020, immerse with NEP 2020, and you should be able to tell
to the Vice Chancellor, sir, in my area, in my subject, in my faculty, we can start these new programs. We can develop a curriculum as per the guidelines of outcome-based education. We can develop new criteria, new credit courses on ethics of research, and number of Indian knowledge system. We can able to put emphasis, I think, on our emphasis, I think on problem solving. Can you able to do this one? See the concept called the Bloom's taxonomy. You refer any, I think, reference book or research paper, people talk of Bloom's taxonomy. What is Bloom's taxonomy? I sincerely believe that every professor in the university, every teacher in the university must be able to understand a concept of Bloom's taxonomy, which is based basically from critical thinking. And therefore, I believe that we teachers must transform ourselves. And friends, my last point I'll tell you, lifelong learning is one of the fundamental principles of the national education policy. We teachers, we must learn. We must adopt the new technologies, new area of research innovation, and then contribute, I think, to the national development through your scholarship, I think. And if that happens with every university, certainly, I think, our task of implementation will be much more, I think, easier, I think. Let this happen that, say, your university, KMCLU University is the first university in the country to implement a particular program in languages, for example. Can you able to have some kind, I think, of the language laboratories for Urdu, for Persian, for Hindi, for English, for Sanskrit? Even though a language university, can you get some kind of funding from the CSIR? Can you have advanced research laboratories, I think, for the languages? Can you initiate some more advanced research, I think, the Prakrit, and the Sanskrit, and the Urdu? Can you have the more emphasis, I think, on translations? So many activities can be done, I am telling you, through NEP-2020. So point what I want to say to you, I sincerely feel is this, I think, if you could implement NEP-2020 very successfully, in letter and spirit, I sincerely feel that every university will be able to make some dent in higher education, I think. And in my next lecture, I'll be able to deliberate with you the concept of research innovation, critical thinking in higher education. Thank you very much. Thank you so much, sir, for highlighting the key aspects of National Education Policy 2020 and also telling us about the international scenario of our country vis-a-vis our global counterparts. And we look forward to hearing your views in the upcoming session. And as you rightly remarked, that the greatness of a nation depends upon the knowledge created by the greatness of our universities, its teachers, and its research scholars. And indeed, we are aspiring to do so as Khwaja Moinuddin Chishti Language University. Thank you also for setting the right tone for this seminar, and we are so happy to conclude this session on this particular note that we look forward to your lecture on research and innovation in higher education in the upcoming technical session. As a token of our respect and gratitude to all the dignitaries who are attending the program, I request my team to present a memento to our Honorable Vice Chancellor, Professor N.B. Singh Sir, on behalf of the university, and I would request the team to please provide a memento. I request the team to provide a memento to our Honorable Vice Chancellor, Professor N.B. Singh Sir. Sir, please, if you could present this memento on behalf of the organizing team to Professor B.A. Chopre Sir, Chief Guest of the inaugural session. I request you also, sir, to provide this memento to Professor Manoj Dikshit,
keynote speaker for setting the right tone for this particular seminar. We welcome you, sir, and we thank you for taking out time. I request our Honorable Vice Chancellor, sir, to kindly present a memento to Professor Arvind Dikshit, former Vice Chancellor, B.R. Ambedkar, Agra University. Sir. And I also request the convener of this seminar, Professor Syed Haider Ali, sir, to kindly present a memento to our Honorable Vice Chancellor. Sir. I request Dr. Ruchita to quickly come up as the organizing secretary of this workshop to present a memento on behalf of the organizing team to Professor Syed Haider Ali for organizing this and for delegating us to organize this workshop. We are now at the last juncture of this inaugural session, and I now request Professor Syed Haider Ali, Head, Department of Business Administration, Director, IQAC, and convener of this seminar, to present his concluding remarks, the key takeaways, as well as the official vote of thanks. Sir. Thank you, Dr. Dua Naqvi. Honorable Vice Chancellor Saab, प्रोफेसर B.A. चोपड़े, प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी, प्रोफेसर अरविंद दीक्षित जी, सामने बैठे हुए हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स योगेश पवार जी जो पुणे से आए हैं, प्रोफेसर फ़हीमुद्दीन साहब, गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़, हमारे कुलीग्स और डियर स्टूडेंट्स। जब ये वर्कशॉप सेमिनार हम लोगों ने प्लान किया तो सर ने कहा कि आप इस पे इतना अच्छा काम करें, जितने भी अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट्स को बुला सकते हैं उनको बुलाइए। सर ने दीक्षित सर के लिए कहा कि मनोज दीक्षित जी से आप बात करिए। सर हम लोगों के पहले ही गुरु हैं, हम लोगों की एकेडमिक काउंसिल के भी मेंबर हैं। सर हम लोगों को हमेशा गाइड करते रहते हैं। सर से मेरा तो बहुत पुराना रिलेशन है। हमारे एक दोस्त हैं, परम मित्र हमारे हैं, डॉक्टर शैलेंद्र चतुर्वेदी। वो इस वक्त VBS आरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और सर के रिसर्च स्कॉलर हैं। तो वो उस वक्त सर के अंडर में इनरोल्ड थे, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैं भी इनरोल्ड था। तो सर से हमारा बहुत, सर ने बड़ी मदद करी और इतने अच्छे लोगों को, ये मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, ये हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब का नेटवर्क है, हमारे दीक्षित सर का है कि इतने अच्छे स्पीकर्स को आप लोगों ने देखी है सबकी प्रोफाइल कि कहाँ से सतना मध्य प्रदेश से सर हमारे पास आए हैं, हमारे पास कानपुर यूनिवर्सिटी से आए हैं सर, हमारे पास दीक्षित सर आए हैं, हमने पुणे से लोगों को जोड़ा है, अभी IT मुंबई से भी, बॉम्बे से भी हम लोगों को जोड़ रहे हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे इसमें कंटेंट मिलेंगे। इस प्रोग्राम की जो खासियत हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें सिर्फ थ्योरी की बातें हम ना करें, हम प्रैक्टिकल भी करें। हम इसमें आउटकम बेस्ड एजुकेशन में COPO को मैप करना, अटेन करना, ये सारी चीज़ें हमको बतानी होंगी। तो उसके लिए हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स आज भी लेक्चर लेंगे, कल भी लेंगे और हम लोग उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। मैं अपने सारे कुलीग से, ख़ास करके अपनी NAC की टीम से, IQAC की टीम से, सारे हेड्स और इंचार्जेस से कहूँगा कि वो अपने COPOs को ले करके आएँ और उसको हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट करना सीखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका कि सब लोग यहाँ पे जुड़े। कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें सब लोगों का सहयोग चाहिए रहता है, जिसपे हमारी जो सबसे पहले है, जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीज की टीम है, डॉक्टर दुआ नकवी, डॉक्टर रुचिता सुजाय चौधरी, मिस निधि सोनकर, जिन्होंने सबसे पहले जब मैंने ये प्रोग्राम शासन में अप्लाई करा तो हमने और डॉक्टर निधि सोनकर ने मिलकर के पूरे NEP के डॉक्यूमेंट को, सर जो आप बात कह रहे हैं NEP 2020 के डॉक्यूमेंट को तो पढ़ा ही पढ़ा हमने, एज वेल एज NEP का जो मेन डॉक्यूमेंट है ड्राफ्ट 2019 का 400 पेजेस का, उसकी भी हम लोगों ने स्टडी करी और उसके हिसाब से हमने अपने सेशंस को डिवाइस करा। इसके अलावा हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी जिसमें बहुत सारे लोग हमारे थे, मिस आफरीन फातिमा, उसके अलावा डॉक्टर जिया जाफरी, उसके अलावा बहुत सारे लोग क्या नाम है, हमारे 3-4 लोग और उसमें थे। सर ने हम लोगों को एक कल्चर और सिखाया यहाँ पर
कि हम लोग सारा काम करते थे, खुद करते थे। सर ने कहा ऐसे नहीं होगा, आपको टीम बनानी पड़ेगी, अपने स्टेक होल्डर्स को जोड़ना पड़ेगा, अपने स्टूडेंट्स को जोड़ना पड़ेगा, अपने रिसर्च स्कॉलर्स को जोड़ना पड़ेगा। सर पिछले कई कार्यक्रमों से हम लोग इसको कर रहे हैं। अभी तक हम लोग कोई कार्यक्रम करते थे, डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स उसको मैनेज करते थे। अब हम लोगों ने क्या किया है, सारे डिपार्टमेंट्स को सर हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। तो सारे डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अलावा एक नया कल्चर और हमने डेवलप करा है कि हमने रिसर्च स्कॉलर्स को इसमें जोड़ा है। हमारे इस प्रोग्राम में 3 रिसर्च स्कॉलर्स की बहुत भूमिका रही है। मुख्तार अहमद, हमारे राहत जबी जो JRF है डिपार्टमेंट की, और घनश्याम दास, इन तीनों ने रात दिन मिलकर के सारा प्रोग्राम इन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया है। तो ये सजेशन आपके लिए भी है कि और डिपार्टमेंट भी इस टाइप की चीज़ों को करे। जितना हमारा टेक्निकल स्टाफ है, हमारे जो है कैमरा की टीम है, हमारे मोहसिन साहब, हमारे अमित, ये सारे लोग रात दिन कोई भी कार्यक्रम होता है बहुत अच्छे से हम लोगों की मदद करते हैं। तो हम सबको, अपने मीडिया बंधुओं का, अपनी यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों का, सारे टीचर्स का जो आए, जिसको सब ने अपने को रजिस्टर कराया, सीनियर प्रोफेसर्स ने भी अपने आप को रजिस्टर कराया, चाहे प्रोफेसर एहतशाम साहब हों, चाहे और हमारे कुलीग्स हों। तो हम लोग यही चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में एक ऐसा कल्चर बने, ऐसी चीज़ें हों जिससे हम लोग अपने आप को बहुत अच्छे से, क्योंकि अब हम लोग NAC की तरफ जा रहे हैं, तो हमको इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो विश्वविद्यालय की ओर से सर सबका, जो हमारे बाहर से लोग आए हैं, दूसरे प्रदेशों से आए हैं, उनका स्वागत और उनका धन्यवाद कि सब लोग आए हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. We now close the inaugural session with the permission of our Honorable Vice Chancellor. Sir, if the organizing team members can kindly join us on the stage for a group photograph. Organizing team members and the professors of the university, sir, please join us. Ehtisham sir, please join us. Masood sir, Fahimuddin sir, we will be honored if you can join us on the stage. Professor Tanveer Khadija, Professor Chandana Day, ma'am, please kindly come up on the dais. Dr. Ruchita Sujoy, is she available? Ms. Nidhi Sonkar and Dr. Zebun Nisa is the member of the organizing committee. Please join us. Soban sir, please join us on the dais. Neeraj sir, you could join us. Thank you so much. Let us proceed for lunch. After lunch, we have another technical session which will be presided over by Professor B.A. Chopre, and it is entitled Research and Innovation in Higher Education. All the participants are requested to please join us as soon as they are done with lunch. Thank you.
नाम उसमें है। Start करें? Good afternoon, one and all. I hope you all are energetic after the post-lunch session. We'll begin with welcoming our special guest, Professor B.A. Chopre. And it's our pleasure that we have him here today because he is an gem that it shines better than the sun also. So we are very blessed to have you here. I would like to say that please Dr. Ruchita Suchai Chaudhary and Dr. Dua ma'am, please escort our guests to the dais. And an important announcement, due to time constraints, we have merged our two sessions. So technical session 1 and 2 will be merged so that we can, because we have so many great speakers, eminent speakers before us, and so that we can listen to all of them. I would now like to welcome Professor B.A. Chopre, Vice Chancellor, AKS University, Satna, Mr. Yogesh Pawar, who is the chairperson for this session, Dr. Nazia Jamal, she is the co-chairperson, Professor Masood Alam sir, our co-chairperson for this session. Please, a round of applause for all the eminent guests. Professor Ehtesham Ahmed, who is the coordinator of this session, Dr. Tathir Fatma, moderator for the next session. Now I would like to call Professor Ehtesham Ahmed sir so that he can grace our eminent speaker, Professor Chopre, with the plant. So please kindly accept. Again for the session. Thank you so much, sir. Aristotle rightly said, educating the mind without educating the heart is no education at all. By this thought, I would give a brief introduction to the achievements that Professor B.A. Chopre has achieved. We are very honored that we have a distinguished scientist, innovator, and academician of international repute. I would go to the details because as Dua ma'am has probably given us a very brief and a very good description of sir's academics achievement, I would just like to say that he was the founding director of Institute of Bioinformatics, Information and Biotechnology at Pune University. His work has been cited in 3 textbooks of microbiology published from USA and Europe. He has published more than 150 research papers in 19 different international peer-reviewed journals of high impact factor. So now he would literally give us how this national education policy, his topic is how it is holistic and multidisciplinary. We all have heard about national education policy. National education policy has recognized not only the academics, but soft skills that a student needs to know. So first of all, a student should be capable of giving compassion, empathy,
he should focus on his physical and spiritual health, not only academics. And NEP is one thing that is it's a very progressive policy, and that is going to help our students furthermore. Now I won't waste any time. I would like to call Professor B.H. Chopde for his session. Sir, over to you. Very good afternoon to all the dignitaries on the dais, all the heads of department, deans and professors, and my students. Now I'll discuss with you research and innovation in NEP 2020. As per the schedule, your schedule say that the first topic is holistic and multi-stream education. Certain I'll deal with that topic tomorrow, but I took research innovation in the beginning today because without that you cannot go for the multi-disciplinary education, and therefore for your proper understanding and convenience I will start with the research and innovation in NEP 2020. As I said to you, the extensive research done on the previous education system has resulted into development of NEP 2020. And if you see the origin, I think, of previous education policy in 1986, which modified 1992, and if you see the problems, I think, of previous education policy, you will find that then there was no emphasis on research and innovation in our curricula. For instance, there was more rote learning, or what you call as memorization, in our degrees, undergraduate, postgraduate, and there was no any emphasis, I think, of critical thinking or what you call as research innovation. And because of that, we didn't have much skills which are required, I think, in industries, are required for the employability, are required for your own development. So nature of the examination, our degrees were based on examination. You take the lecture, student attend the lectures. After lectures, you take examination. Papers are evaluated. Result is declared. And then we get a degree certificate. And then we say that our graduation is complete. And here I would like to say, in this method, I think, of education, there was no any emphasis or any stress on research in general and innovation in particular. And that was the root cause, I think, of the non-development, I think, of higher education in the country. I'll tell my one case study to you. When I went to Britain for doctorate in microbiology in 1983, from Pune University, I was just 25 years old. I was ranker in Pune University, masters in microbiology. And I went to Britain, and my professor BSc PhD. Now and at that time there was no internet, there was no photograph, nothing. I'm just, just research publications we used to see. When I saw my professors, I think BSc PhD, asked my professor very politely, sir, how do you do PhD after BSc? I mean, that was an obvious question in front, I think, as a student, I think. Then he told me, very politely he told me, Professor Chopade, I know you are MSc microbiology from Pune University from India.
we value. But remember, what we study in BSc is more advanced than what you study in MSc in India. And in Britain, we don't require to do master degree for doing PhD. Their bachelor degree is final. What you call 4-year undergraduate research program now. When I am telling the story, 1983. And Great Britain has been using this, I think, concept of 4-year undergraduate from 1960. You can able to imagine the difference, I think, in our education system, I think. The point what I want to say to you, whatever you are talking now, research innovation, that has been going in the Europe, I think, not only in Britain, in Europe, I think, throughout the almost centuries, I think, And that's why education over there is more meaningful, I think, From that point of view, what I want to say to you, what are the pertinent, I think, things in case of research innovation in NEP-2020? From where it starts? How it starts? What is the mode, I think, of the delivery, I think, of research innovation? How to implement research innovation, I think, And ultimately, we have to ask, what is net impact, I think, of research innovation in our education system as such? And from that point of view, I must tell you, in single sentence, research and innovation is the soul of the education policy. I'll give an analogy for clear understanding. We have the body, okay? Suppose there is no soul from the body, what happens? We are by body, we are alive. If there is no soul or no pran, body is dead. Are you getting a point? Similarly, if there is no component of research and innovation from education, education is dead. It's not real education. It's just education for employment point of view. It's not for creativity. And therefore, research and innovation is the soul of national education policy. And for this purpose, out-of-box thinking is of paramount importance. When I say out-of-box thinking, what I mean is this: you think something different, something innovative, something original, which is not given the textbooks, I think, of the syllabus of university. Please try to understand. Anybody can read the textbooks are given in the syllabus of undergraduate or postgraduate. But I am saying out-of-box thinking. You can learn more than that by independent thinking. And try to experiment, try to do it again and again, practice it, I think, and follow to that, I think, you complete, I think, that your, I think, the new idea and persevere it, I think, and continue it. So it is that important, I think, having research and innovation, I think, and therefore out-of-box thinking is a must for every professor, every teacher, and every, I think, say, for example, I think a researcher. Like example of Thomas Edison. I'll ask simple question to you. Many professors from colleges and universities, when I talk to them as a friend, of course, what are you doing? The first thing, sir, there is no facility. So there is no guide. So I have not done PhD. I want to really research, but there is no guide, I think, and therefore I am not registered. Our idea of research is only if you are registered, then only can do research, which is wrong. It's not like that. Every student of a university, every professor of a university or a college, one who is a graduate or the postgraduate, is capable of doing research, capable of following research methodology. And for that purpose, you don't have to wait for so-called, I think, as a registration for PhD form. And then you start research. No, you don't have to be. Remember one thing, all the professors, research and innovation is continuous process. It's continuous process. It's not only for the degree, for the PhD.
or submitting your thesis. And for that purpose, what is the most important thing is this, I think, that you have to develop, I think, critical thinking, I think, I'll give an example of country research, innovation, and out-of-box thinking. A scientist called Albert Einstein. I'll quote the sentence Albert Einstein, I quote, "It is not so very important for a person to learn facts. For that, he does not really need to go to a college or university." Listen very carefully. It's a quote by Albert Einstein. "It is not so very important for a person to learn facts, or that he does not really need to go to college or university. He can learn from books. The value of education in liberal arts colleges, it is not learning of the many new facts, but the training of the mind to think something that cannot be learned from the textbooks." I repeat the sentence again. Learning of many facts in colleges, but the training of the mind to think something that cannot be learned from textbooks is what is called critical thinking. Now imagine that here I give example, I think, of this, I think, the Edison. Edison was dropped out from the second standard. Edison was not able to speak. So Edison didn't perform very bad, I think, in the school. This happened in New York. And the teacher wrote a letter in the cheat to the mother, I think, of Edison, that your son cannot, I think, is not proper to study or take education. He is very dull. He will not able to do anything in the life. And he doesn't come regularly to the school and doesn't understand what we are teaching. And he argues quite a lot. And he put that note in the bag, I think, of that child Edison. When Edison came home and saw this, I think his mother saw that note. The mother was a bit, obviously mother being mother, I think, she was a bit worried, Daddy, what happened to my child? Why he is not able to do good in the class where all children are doing good, but he is not doing good. So the mother thought very carefully. Now, had mother told what teacher had written in the cheat, probably the boy would have become very discouraged. The boy told honestly, "Mummy, a teacher has given some note to you, and teacher have warned, don't open it. Only your mother will open it." So that Edison asked his mother, "Mother, what is written by the teacher?" What is your imagination? What would have happened? Some mother might have been angry with the child. "What are you doing? You don't pay attention to the school. You are not a good boy," so on and so forth, I think. Edison's mother told Edison, when Edison asked mother what teacher written, mother told, "Dear Edison, your teacher written, you are a very intelligent boy. You are so great, so clever than anybody in the class. And he has appreciated you." See the transformation of life, I am telling you. The mother converted that bitter truth into such a way that Edison got transformed. And I tell you, from second day onwards, Edison did not go to school. He was under the impression, I am the most intelligent boy in the world. Why I need to go to school?
And my friends, Edison got 1092 patents. Now you tell me. And remember, patent is invention. Patent is a invention. When I say invention, it is original, something novel, something new. It's not research. Remember, every research is not invention, but every research is invention. Every research is not invention, but every invention is a part of research. So what happened? Edison discovered so many fundamental discoveries in science. What electric bulb we are seeing is an invention of Edison. When at the age of 30, he had acquired 1092 patents without any formal education, without any degree, without registration for the PhD in university, or without any mentor. Because mother told, you are very intelligent, you can do anything. So this is what I want to say to out of box thinking, I'm telling you. Now that inspired Edison to think out of the box. This inspired Edison to think out of the box, I think. And he created, I think, wonders, I think, of the world, I think. Now, dear friends, in research innovation, I think, now when does it start, I think, Now research innovation start with the curricula. The curricula which we have been making, that curricula must have a very rich component of research, emphasis on research. For example, NEP-2020 has envisioned establishment of 4-year undergraduate degree program in all branches of knowledge, all faculties of in the universities, arts, commerce, science, technology, medicine, engineering, agriculture, everywhere. Now the current model is a 3 years degree program. And after 3 years degree program, student goes to the master program in any faculty, maybe engineering or arts, commerce, social sciences, or technology, in any field, they go for master degree after the undergraduate degrees. But engineering colleges, undergraduate is 4-year degree course in engineering colleges, I think. What you call a BTech. If you see BCom or science or BA or journalism, they will find, I think, only 3 years degree course, I think. So here what happens, I think, when it has to do the 4th year entirely dedicated to research. And here one has to write a research thesis as if you are a PhD scholar, as if you are a regular PhD student. It's not PhD, but the process is same. So in the first year, see the concept of in NEP 2020, the slow learners and the fast learners. Again I tell you, every student cannot become a scientist. Everybody is intelligent, but it's aptitude for research. It requires research mindset. Every student does not have research mindset. And from that point of view, it is the duty of a teacher to find out. We students, I think, are fast learning. We students are slow learning. We students have more, I think, the knowledge, more, I think, the liking for the science. We students have more, I think, affection for research and innovation. And accordingly, teacher has to promote the student, nurture the student, inspire the student out of lectures and practicals. Remember, this is a very important point. And therefore, for research innovation, NEP 2020 say that research and innovation start from school. Start from the school. And when I say start from school, for example, when a child completes, I think, the 5th standard in the mother tongue, the 6th standard onwards, I think, child can learn into the English.
or national language, whatever I think is, as per the university or the college. And here, emphasis is given for mathematics, STEM subject, science, technology, mathematics, and engineering. And subject like computational thinking, computational mathematics, artificial intelligence, coding, I think, of the programs are taught in the schools right from the 5th standard onwards, I think. And this is the foundation, I think, for research innovation, I think. Mathematics is a language of science. Please try to understand. We are thinking research only at level of PhD. I am saying NEP 2020 envisions beginning of research from school, from 5th standard onwards, because human brain is completely developed by the time student becomes, I think, the 9 to 10 years old, I think. And once human brain is completely developed, then that student get ability to think critically or independently, and he can, I think, put his mind into the innovation or, I think, innovative thinking, I think. So then, when such students come, I think, when such students come into the, say, for example, I think, to the high schools, I think, they have the projects. For example, I do not know how many of you have heard, I think, about the summer training programs, Inspire programs, our government of India. The teachers from colleges, professors from colleges, you can organize a summer training program, I think, of 3 weeks to the high school student, school student in the campus of the college and university, and inspire them, promote them, identify the interest, I think, of the students, have more discussions with them. And a follow to that, if then the students will come to the university or a college, what is going to happen? The students will have the opportunity to take up in the independent thinking or developing the critical mind for the research, I think. So training starts from the school to high school to the college. And when come to the college, he knows research methodology, he has done some projects, he has written some, I think, outcome oriented, I think, the observations of his research. And now he knows what is research and method, what are the principles of research. With this background, when students come to the college, there is something called a Kishore Vidyam Puraskar Awards. I must tell you, in Pune University, India's first 5-year integrated program in biotechnology was started by me in 2003. And Hyder Ali, you will surprise, 10,000 students used to apply to Pune University after 12th standard. After 12, 10,000 to apply all over India. And number of seats only 30. But the criteria was that what we are talking NEP 2020, I implemented 2002 because I studied abroad. And because my professor was BSc, PhD, I knew what is the dynamics, I think, of the research undergraduate level. So it was my dream, Hyder Ali, to start 5-year integrated program in biotechnology, which is research oriented. And you'll surprise that, conventionally do, I think, the 3-year MSc, then 2-year MSc, and this became integrated program. There is no BSc. Direct admission to master's program. Of course, after 12th standard. And we, the professor from Pune University, heads of department, scientists from National Chemical Laboratory, National Institute of Virology, all National Institutes of Government of India, we used to call people across the India. I am from Pune University professors. We used to test students of 12th standard. Why? Young minds are more tender, more receptive. They can moldate to develop the interest, I think. Imagine 12th standard student attending your lecture, and I think he is inspired, I think, by a particular theory, or particular phenomena, or particular subject, or particular idea, and then he develops further, I think. And that becomes his passion in the course of his time, I think. So developing the interest of the student in science is of paramount importance, along with finishing your curriculum. Finishing curriculum by lecture is not only the way. And I must tell you,
2003 program started, and 2008 first batch came, I think, And I'm very proud to tell you, number of my students published 4 to 5 international papers in peer review international journals before they got the MSc degree in biotechnology. I used to go 8 o'clock in the morning in the Pune University and go back after 12 hours at my home. My friends, come on, tremendous dedication, I'm telling to you. 12 ghante I used to work in the university as a director of Institute of Biotechnology. 24 hours labs were open, I think. And what was the mechanism? Professor, research mentor, postdoctoral scientist, PhD scholars, master students, integrated students work together in the laboratory all the time. There is no limit, I think, of time. Labs open any time, I think, and labs are open, I think, Number of my students got Indian patents, number of students got American patents. 5 of my students working with Nobel laureates in America. All this happened because of the integrated education, integrated fire program. And what I want to tell to you that National Education Policy 2020 envisions starting 5-year integrated programs in your every faculty. Engineering, technology, pharmacy, biotechnology, microbiology, arts, commerce, and science. You can do that. Besides 4-year degree, you can also start integrated programs in biotechnology, in microbiology, and integrated programs are highly valued. And here, when student goes, I think, to the 5th year, he writes his research thesis. Only research thesis, I think. Like PhD student, there is a research committee advisor to the student, at every student. Student publish their, I think, research papers. And on the basis, I think, of this, I think, they are awarded, I think, what you call, I think, as a master degree, I think. So what I want to say to you, we have established a benchmarking of research innovation at undergraduate level. And remember, young minds are more creative. Young students are more creative, more passionate about knowledge, more passionate, I think, about I think, this, in case, I think, more passionate about research innovation. They are passionate about the new ideas of science and technology. But for that purpose, a teacher must inculcate interest into the minds of the students, I think. Now, coming back, I think, to research innovation, I think, there is one more, I think, problem, I think, in the NEP-2020. And the problem is that, see, what's the whole objective of research innovation? In the morning, I mentioned about the world economies. And I said that India is the 5th largest economy in the world. 3.5 trillion economy is the economy in India, 5th largest in the world. We have surpassed, I think, Great Britain. And it's predicted by 2025. After 2 years, Indian economy will go, I think, to the 5 trillion economy, will be the 3rd largest economy in the world by 2025. Point I'm telling you. Now, when I say economy, remember that, now you may wonder, I'll tell one mechanism behind this, I think. During COVID-19, there was lockdown in all the country. But in India, the revolution came in education. Revolution came in the finance. Revolution came into startups. During this period, 2019 to 2022, what happened? There were, I think, more than 100,000 startups started in India. In finance, in medicine, in technology, in entrepreneurship, in social sciences, in agriculture, in biotechnology, so on and so forth. And I must tell you, the current situation that in India there are 102 such a big, I think, unicorns. Does anybody know what is unicorn? Does anybody know what is unicorn? Yes?
Excellent, very good. You are professor here? Great, very good, congratulations. I'm so happy, very happy I think about it. See, a company means startup. A startup is a new company, a new business, you can say, simple language. A business, a company which is newly started and which has a annual turnover of 1 billion. 1 billion means 8,500 crores. 8,500 crores is called as unicorn. India has 102 unicorns from 1992 to 1922. 2019 to 2022. And now, this is all because of research in fintech, finance and technology. Say Paytm, all I think online transactions is example I think unicorns. And there you can find that, now if you see this economy, now India has generated $300 billion economy through unicorns. Please try to imagine. And now at the moment, India is one of, I think, largest country, at number 3 in the world, USA, China, and followed by India is third country in the world in the field of unicorns, I think. A stage ahead. This thing called a Decacorn. Now Decacorn is a company whose turnover is $10 billion per year. And India has 15 Decacorns. And now I am telling you, and that's why Startup India, if you imagine that our Prime Minister's vision, Startup India 2015, this is all net result of Startup India. And remember, Startup India is basically based on concept of research and innovation. In the morning, Professor Haider Ali told me, you have the incubation center. It's very good. You have 3 incubators with you, 3 startups with you, I think. It's a good beginning, I think. I believe your university must have incubation center where we incubate the ideas and follow the ideas to experimentation and develop into a form of what you call, I think, the patent, or what you call, I think, IPR, I think, and that patent can be translated in terms of, I think, a prototype, I think, or a product, and you can able to have own startup which can be given a space into the what you call, I think, incubation center. Right? Friends, point what I want to say to you, base up all these things, I think, is a research and innovation, I think. And from this point of view, what I want to say to you that this is need of the time. Had you not the research mind, we would not able to have this kind of unicorns or this kind of decacorns, I think. And from that point of view, Government of India has initiated the pre-registration for intellectual property rights, IPR, for the universities and the professors who work in incubation center. If you have, say, for example, novel idea, remember, you don't have to be PhD. You don't have to be registered. Again, I am telling you, you don't have to be registered for PhD. You may be simple graduate. You may be 10th standard pass, doesn't matter. But if you have the innovative ideas, if you have the new concepts, if you have the new thinking, that new idea, new concept can be translated in terms of, I think, a process and product, I think, you will become billionaire, I am telling you. And that's what I am telling to you. Okay, this all is a concept, I think, based on research mind, I think, in that. Research and innovation. Imagine Zuckerberg, that Facebook inventor. Who is Facebook inventor? Mark Zuckerberg. He's a dropout from Stanford University. Dropout. This summer I was in Stanford University for some work. He is a dropout from the second year only, I think. He was not able to complete his education degree even. But he has research mind. He said that this degree is not very interesting. Taking lectures, giving examination, not very interesting.
Mark Zuckerberg, I think, developed his own imagination, own ideas, and he gave rise to, I think, to startup, what you call today, I think, as a Facebook, I think, So point what I want to say to you, you don't require to have a degree for that purpose, I think. So all the professors remember, all the young students remember, you all are waiting for the registration for doctorate, I think, or research. And or, you say that, sir, बहुत करना है, पर कुछ guide मिलता है नहीं, sir. You are your own guide. Become Ekalavya. I am telling you, become Ekalavya, I am telling, then you can able to, and open the mind. Remember, my friends, human mind has infinite knowledge. Infinite knowledge. Open the mind, I think, And from that point of view, I think, what we require, I think, critical thinking. And remember, NEP-2020 supports more emphasis on critical thinking, I think, That means, what is critical thinking? Can anybody tell me what is critical thinking? Critical thinking is the foundation of research. Can anybody tell me what is critical thinking? आप बराबर है, आप जो कह रहे हो बहुत बराबर है कि किसी को चीज को हम बिलीव नहीं कर सकते unless you want to experience yourself. I must want to tell you one example, I think, of the great philosopher Gautam Buddha. Gautam Buddha used to always say to his followers, don't believe in what I say. Don't believe because your mother has said or father has said, or don't believe because your teacher has said. Unless you experience yourself, don't believe into it. And that. This is search of truth. Everywhere. So, what you say is right, I think that unless you realize, that means a critical thinking is very skeptical. A critical thinker is very skeptical, I think, He is very, I think, I'll say that evaluative. He always wants to confirm, challenge the theories. Now you know that ChatGPT, you know that new technology has come, ChatGPT is going to be challenged to the Google. Take my word, after 5 years, probably we will be able to stop using Google, I think, and go, I think, for the ChatGPT. Now, but let us say in India, let us say 5 years in India. So, see, this is evolution, and how it came? Research. It doesn't come suddenly. So for development of technology and innovation, it requires innovative minds. And continuous thinking for the same, I think. And therefore, a critical thinker is the one who is able to analyze, who is able to interpret, who is able to evaluate, and at the end, who is able to come to certain conclusion. Confirm it, ascertain it, and make sure that that truth is correct. And this applied to science, applied to everywhere. And for that purpose, you have to be a very keen observer of nature. I'll tell you one case studies of one farmer. When I was a vice chancellor in Aurangabad, Hyder Ali, I called one farmer, which was 3rd standard pass. And I gave him Lifetime Achievement Award for his entire work of life. And I requested the farmer, kindly give one lecture to my all professors. What you have done. Now you may wonder me, though he is not PhD. He has not gone to university. He has not gone to school or college. That farmer called the Khobragade farmer from Yavatmal in near Vidarbha region, near Nagpur. He discovered 10 different species of wheat. 10 different species of wheat. No laboratory, no chemical, no money, nothing is there. Just open sky and land and the plants. What he observed, I am telling you, his story was published in the New York Times. And I happened to read that, I think, story.
And I was very impressed. Such a great man, I think, a farmer who discovered 10 new species of the wheat. I invited to my university, I had a little discussion with him, and I told him, how did you discover these 10 new species, I think, He told me, sir, I have 1 acre farm, 1 acre farm. And when he sowed this, I think, 1 acre farm, he sowed that wheat. He observed that in middle, I think, of that 1 acre, one plant, a wheat plant, grew very fast, quite fast. And he observed that the size, I think, of grains was quite big. And something, only one plant. A farmer was curious. He said, how come this one plant has, I think, become so tall, so healthy, and the grain size also is, I think, very big. So that farmer saw that something good. He made sure that it looked like a wheat. He realized it's a wheat only, but growing something very fast, I think. What he did that, very carefully he observed that particular plant. And that after, 3.5 months that harvesting came, he harvested that wheat plant separately, collected the seeds. And the next year, he sowed those seeds, and he previously got, say, 5 quintal per 1 acre. Here he got 10 quintal per acre. A farmer. Then he repeated, let me try again. He tried for the 5 years. Again in the second year, he got one, I think, plant grew. One wheat plant grew again tall like this. Likewise, every year he used to got one new variety. He tested the variety in the field, in his own field, I think. This is how farmer Khobragade discovered 10 new species of the wheat. Madam, he don't have knowledge of genetics, knowledge of agriculture, observation of the nature, I am telling you. Curiosity, observation, I think, and I am telling you, then he was invited, the New York Times, I think, published story, a wheat man of the world. And I was very surprised. I think, how come I think a farmer can be, I think, so concept and grassroots innovation? My friends, remember, everybody is a scientist. Everybody is born a scientist. Only few get chance to get opportunity to work for science and get the research. But many of us don't get opportunity to do the research, I think. But remember, that does not mean that we don't have the imagination. That does not mean that we cannot innovate, I think. It's a question, I think, of the critical thinking. It's a question, I think, of imagination, and question, I think, of the continuous thinking, I think. Remember, from that point of view, the Khobragade was applied for the 10 patents. Unfortunately, Agriculture University stole his research. Khobragade didn't get the patent. He requested them, I would like to patent, but he doesn't know anything, only Marathi he knows, I think. Agriculture University stole that research, I think, of the farmer. Very unfortunate, I think. When I came to this story, I thought that I must, I think, felicitate that, I think, a farmer. I invited to my university, and I told what your son is doing. He was doing BHoc in mechanical engineering in my university, and he requested me, the folded hand farmer, sir, please, give admission to my son to this, I think, BHoc in mechanical engineering. And sir, what I can do as a teacher, I think, as a professor, I think, I give free admission to his son. I give the free hostel to his son, I think, And I assured him that your son will become, I think, BHoc, I think, mechanical engineering. He'll get a good job, I think, And even the food was given free to him, I think, Point what I want to say to you. We have to promote research at grassroots level too. And this kind of research is needed at the time. So now tell me, my friends and professors, if a farmer can do research, he don't have library, he don't have laptop, he don't have, I think, any mobile with him, but he is creative. And therefore, NEP-2020 envisages creativity among the students, I think, is of paramount importance, I think. NEP envisages.
And therefore, teacher has to be more creative. A teacher has to be more creative. I tell you one example. When I was a Vice Chancellor, Sir, Hyder Ali, one boy came to me. He was, I think, 11th standard. 11th standard. Now, he asked my appointment, sir, I want to meet you. My PA said that, what is work with Vice Chancellor? And she said, no. The boy called me, I think, again. Sir, I came to meet your office, but that your PA didn't allow me to meet. I said, but what is your problem? He said, I want to discuss with you. And he came with his father. Sir, I talked to him. The boy told me, 11th standard boy, sir, I had discovered new device. What he told me, suppose sir, someone get lost. How to locate them if they are lost? So he made some device, IT device, using sensor. If you could put device into the shoes, device in the shoes, wherever you are, the device will tell he is there. See the imagine of 11th standard student, madam, I think. Then I called my professor of electronics, I think, from my university. Because I don't know much electronics, I think. I said, look, the boy seems a very interesting, I think, observation. You please take him to lab, I think, and allow him to work in lab. Sir, he got 2 patents for research, I think, in that. My name is not there. I am not meant for that. But I showed the path. You can go ahead, you can do it, I think. This is what is called as engagement with the young generations, I think. I am not his teacher. But what one can do that, and therefore you professors and NEP 2020 envisages continuous engagement of students. See what happens, I think, I know you are very much having workload, but I don't agree with the workload, I think, When I engagement, your lecture is over, practice is over, at the end of that, I know you are tired. Give 1 hour to the students, have a group discussion, have a free, I think, talk to them, be friendly with them, feel that I think they are son or daughters, they are like son or daughters to you, inspire them. And if you could do that one, and also try to find out what are their interests. For example, a student is working, I think, say, for example, I think BSc Biotechnology, for example. Now, that student want to do something different experiment, maybe DNA sequencing. We don't have the facility. But the boy is very intelligent. The boy has, I think, a lot of curiosity. He is, I think, clever. He wants to do something creative. As a teacher, I must ask, what I can do to connect the student, I think, to better research institutes, I think. So, connect the student to better research institute is my job. And if I could do that one, you can see fire into the student, I am telling you. So, this is what I mean, that the continuous engagement of students is what is important, I think, for research innovation, I think. And therefore, this new concept has come called as a research university. Friends, listen carefully. NEP 2020 envisions establishment of 3 types of research universities. What are 3 types of universities? To promote research, number 1, a research university. Can anybody tell me what is research university? Can anybody tell me, students, professors, what is mean by research university? A research university. A research university is a university whose mission is dedicated to research and innovation. I'll give an example to you. We heard the names, I think, of the IISc Bangalore. IISc Bangalore is Research University of India. Now, IISc Bangalore only for PhD and postgraduate scientist and engineering education, for undergraduate to postgraduate education. But remember, their entire mission is only for research and innovation and entrepreneurship. And the teaching learning, entire teaching or pedagogy of teaching, entirely based by research. Now I tell you, from this point of view, one of the important parameter of research university is that research university has its own campus, like how you have your own campus. Number 2, they must have undergraduate program. Now if you go to Delhi University, or maybe Allahabad University, I don't know, but they have only PG educations, PG and PhD. And all the undergraduate studies are taken into the colleges, I think. Such universities cannot become research university.
So therefore, research university must have very strong undergraduate program in all the faculties, not only science and technology, in all the faculties, including arts, commerce, and humanities and management too. And the professors of university must teach to the first year students to inspire them, I think. Remember, in America, when we were attending, I think, my postdoc research visiting scientist, I have seen Nobel laureates teaching to the first year students, I think, of university. Nobel laureates teach to the first students of university. Why? Can anyone tell me why? Why Nobel laureates teach to the first year students of the MS in university? I would agree with you, they are able to answer. They also don't answer all the questions, because, see, in their field, but still, okay. The answer is that with their research work, with the inventions, with the discoveries, when they tell them in the pedagogy, in the form of pedagogy, students get inspired. The students get motivated. And what is the most important thing in science and technology and innovation? We must be inspired, I think, by to do something creative. And that gives birth to the creativity among students. हम देखते हैं ना, जब मैं देखता हूँ कि कोई नोबेल आर्ट टीच कर रहा है, तो मैं भी काफ़ी ध्यान से सुनता हूँ, ध्यान देता हूँ, मिस नहीं करता. और मुझे भी ऐसा लगता है कितना अच्छा कर रहा है ना, कितना अच्छा पढ़ाता है, कितना बड़ा अध्ययन है, कितना बड़ा अनुसंधान है, कितना बड़ा आदमी है ना. तो हमारे मन में आता है मैं भी ऐसा बन जाऊँ क्या. तो मन में विचार आता है कि मैं भी ऐसा बनने की कोशिश करूँगा. तब ध्यान में आएगा उस बनने को, इस प्रकार बनने के मुझे भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी. सो क्वेश्चन ऑफ परसेवरेंस is created in the inner minds of students. I am telling you, it's not only answering the questions, I think. I have collaborated with Nobel laureate too. And they also don't know all the questions. Remember, knowledge is infinite. I mean, no one knows all the questions, I think. We try to understand the science, I think, in that. We try to understand the science through experimentation and through our research and innovation, I think. And therefore, I am telling to you that research university is university where who goes to research university? Not everybody can go to research university. Please take in good spirit. Suppose if I want to become businessman, why I should go to research university? I must not. I should go to the place where I think I get training for the business. If I want to become, I think, say for example, I think if I want to become, I think, the entrepreneur, why should I go to research university? I should go to the, I think, any other university where this kind of training is available. In other words, research university do not have the job-oriented courses. And Hyder Ali sir, in Pune University, when I was director of Ministry of Biotechnology, we never invited any person from industry for placement. There was board in my institute. This institute, I think, give birth to the young scientists of India. They are not meant for the job. They are not meant for the employment. I never call anybody. No, because see, we have to nurture the students, I am telling you. I am not against the job. The point what I want to say to you that the motto of my institute is develop creating scientists, I think, for the country. Developing, I think, science, technology and innovation. So point what I want to say to you, and therefore in research universities, only those students who want to become a scientist or researcher or entrepreneur or want to develop something startup in technology, such people only go to the research universities. And friends, one last point. What is success rate of admission for research university? What is success rate? Can anyone tell me? No. 4% to 5% to 6% is a success rate of research university. Imagine if 100 students applies to the say Stanford or Harvard or Cambridge or Oxford, success rate in Stanford is a 4%. All 100 are the best.
among the best of 4 only. And when you go there, what is the fee? 1 crore per year, sir. 1 crore per year is undergraduate fee. Try to imagine the dynamics of the research innovation and the research university. 1 crore, my daughter studied in that university, that's what I'm telling you. 1 crore fee for 1 year. Me as a professor was very difficult. But fortunately, my daughter got Government of India fellowship. She went for a research university. Otherwise, sir, for a professor in India, it's not possible to get 1 crore, I think, lifetime. We may get only 20 lakhs per year. We get, and what to do? How to run the family? So, point what I want, so 1 crore rupees per year. Suppose you are doing undergraduate degree in research university, 4 crores only fee, plus maintenance, plus hostel, I think, you can able to imagine the expenses, I think. But at the end of the 4 years of the degree, he become like, I think, in the lines of Zuckerberg. He become entrepreneur. He become innovator. He become an inventor. He became, I think, something you want to start new industry in Silicon Valley. So, मुझे लगता है Silicon Valley is a valley. It's not a valley. It's a plain land. It's a plain land of thousands and thousands of kilometers, I think, in California, near that University of Stanford, I think. And budget of the research university is very, very huge. So when I went to this summer, I was there in Stanford. Budget of Stanford is $9 billion, 1 year. $9 billion budget of 1 year. How much into dollars, in rupees, crores? 75,000 crores budget per year for a one campus university, not affiliated college. $75,000 crores per year. And 93 Nobel laureates are working on the campus of university. We had Nalanda like that, sir. We had Tarshish like that. And that's why India was, जो कहते हैं ना, सोन भूमि थी. That was the reason, that's why people all over the world came to India. Where is India? Let me find India. So point what I want to say to you. So, and therefore, the point what I want to say to you, if you want to make India as a superpower, economic power, we need to have research universities. And therefore, NEP-2020 envisages establishment of Meru. MERU, Meru. Does anyone know what is Meru? MERU, Meru, Meru University. A new concept in national education policy. Meru is multidisciplinary research university. Meaning thereby that university should not be only, I think, for one branch, one faculty, one school. All branches of knowledge must be present on the same campus of university. I remember, I studied in England, I think in 83, 86 in Great Britain. Sir, at 7:30 in the morning, entire campus students is full of students. Everybody is running and walking. What for? I was very new to their culture. Because we go here, I think 9:30 or 9 o'clock in the university. There 7:30, everybody, even though it is snowing, they are busy running into the snow for attending lectures. And those are 12th standard students who have taken admission to the universities, I think. The point what I want to say to you, NEP-2020 envisages establishment of at least one Meru at each district in India. And therefore, by 2030, hopefully, I think, we'll have 500 Meru universities in the country. Now, there are a number of, I think, a lot of, I think, theories about this, I think, Meru, I think. Some scientists say, for example, I think Aligarh Muslim University, one of the very good research, very good university. Can you develop Aligarh Muslim University Research University? Delhi University. Can you develop Delhi University Research University? So developing some of the very good universities as research university will be easier than establishing completely new Meru University. Because for establishment of a new university, you require minimum 5,000 to 10,000 crores.
And I don't think government of India has this much funding. I mean, I'm telling you frankly. I'm talking in relation to research innovation. NEP has envisioned, this is what we want to develop India, I think, in research, I think. And if this happens, even I say if India has created 10 research universities, and suppose, say, for example, 5,000 crores per one university, 50,000 crores, I think, 1 year. If India spend like this, I think in the next 15 years, Nobel laureates will be created from these universities. What we need is a funding. What we need, I think, is support. What we need ecosystem for research, I think. Imagine early in the morning, you are, I think, gone to university. I tell you, everybody is busy and talking. Have you read the paper in Nature? Have you seen their patent? Yesterday there was a discovery, I think, from France. When you go to campus at Cambridge and Oxford, and when you go to canteen, no one look up to the mobile. People are basing while taking coffee and tea. This is my paper. I have written the manuscript. Kindly go through it and give you a comment by today evening. I had to shoot my professor. Have you read the paper? Have you made this, I think, journal? Have you seen this new book has come? People are talking only research. I am telling you, young students in Tokyo University, young students in London University, young students, I think, every Cambridge, Oxford, and I went to the recently, I think, Yale University, University of Columbia. All young students are busy, I think, in interaction with each other in that. What you read yesterday, I didn't understand this point. Let us have discussion. Over the cup of tea, people are discussing, I think, over the laptop, I think, and discussing the models, I think, of the supercomputer. That culture, my friends, my young professors, we have to create in our university. And I sincerely feel that, I think, this is possible doing here, I think. See, you cannot read all the papers, all the research papers, and the books, and become a great scientist overnight, I think. For that purpose, sustainable research, sustainable continued research is paramount importance for the universities and for research scholars. I tell you by one case study. One case study. How sustainable research is more important. When I was in Chicago University I was doing scientist at Chicago University. And the world's first genetic engineer, Professor Ananda Mohan Chakravarti, was my professor. Sir, Hyderabad, sir, I refused Stanford and Cambridge for that Chicago, that professor. Because he was first genetic engineer of the world. And when I was in undergraduate in microbiology, I was highly inspired by Ananda Mohan Chakravarti. Genetic engineer, microorganisms, patents, US patent, the great scientist. So I thought one day I'll be able to go and work with him when I was in first year of college. That was my dream. I never thought that it is impossible. After coming a PhD in England, when I came back to Pune, and then I thought that I want to go for postdoc research, I went to that Professor Ananda Mohan Chakravarti. The period for that was for the 2 years. Unfortunately, the problem which was selected by me, given by professor, went wrong. It failed. I told Professor Anincho, sir, I think Professor Chakravarti, the problem is failed. I mean, our hypothesis is wrong. Out of 2 years, my 1.5 years have lost. But I was not nervous. I didn't blame my professor. Anand Chakravarti being in India, and he said, Balu, Chopadi, I'm very sorry. This didn't work out. I said, don't worry, sir. I'll find out something new, I think. Then what I did, I went to library. I studied 300, 400 papers. In 1996, Nobel Prize, 1994, Nobel Prize for G protein was given to the Edmund in cellular medicine. And that was on guanosine triphosphate binding protein called as G protein, I think, like ATP. And that was homologue of RAS oncogene, sir. It's a homologue of oncogene, RAS oncogene. In humans, in animals. Now, when I was sitting up, 1.5 years is gone, very bad, I think. Obviously feel bad. But I say that, good, I realize that is also not there, is also not less. I realize it's not, that didn't work, is also not, is valuable to me. So I was trying to talk to myself, I think.
Then what happened? I thought that I put a theory. If Nobel Prize has gone to the Ras oncogene, I asked one question, and the question was that, does Ras oncogenes are present in bacteria? This was a question which I thought. Now, idea looked very crazy. Nobel Prize went for the human genetics. I am asking whether that phenomenon may occur into microorganisms. Then I told my professor, Anand Chakravarti, sir, I think this is what I feel like. Can I try this? I think. No? Professor Chakravarti said that I don't think it's possible. I think it will happen. Then I talked to my colleagues, other postdoctoral scientists, I think, He said that how is it possible? I think you talk, I think, of this your concept into bacteria. Then what I did that, I studied 300, 400 papers, I think, And I got the idea, approach I got the idea, how to design, how to devise assessment to see the activity of G protein, I think. And sir, I am telling you, I said, Anand Chakravarti, that I'll give a lecture, I think 1 hour, give time to me. I wrote a review of 300 publications, give a presentation, I think, to all the, I think, scientists in Chicago. And I say that I'll embark, I think, on the problem. Sir, within 6 months, I discovered a new gene in bacteria, which is named as a PRA gene. And when announcement was made, the Stanford University 3 Nobel laureates called me. We want to collaborate with you. See, I'm telling to you. Now, this is something called as intuitive knowledge. Intuition plays a very, very important role in research and innovation. So please try to understand that this is very important. Intuition plays a very important role, and therefore nurturing the intuition is very important. Point what I want to say to you, research and innovation for this purpose, you'll have to really think out of the box. NEP-2020 envisages out of box thinking, then only this is possible. Otherwise, you cannot get the new idea from textbooks or written books, I think, So this is what I want to tell to you. And the other one thing I must tell you, that research is over another type of university. Now, one question, there is only one research university in India, Indian Institute of Science, Bangalore. Now, second type of university for promoting research innovation is teaching and research university. This, I think, our university, I think, is a teaching as well as research university. We also do PhD here too, microbiology, biotechnology, and other subjects, we do PhD here. So those universities do teaching as well as research, are college teaching universities, I think. Now, here is no, I think, any restriction. But I'll say that 50% teaching or 60% teaching, 40% research, I think. The second type of university. And third type is autonomous colleges. This new phenomena which NEP-2020 has given, that is, those colleges which are NAC accredited, they can be given, I think, as a status autonomous colleges. And these autonomous colleges can able to give independent degrees to the students, as if they are the universities. But in the course of time, they'll have to form the clusters, what you call the cluster university, or they can become a deemed university, and or they can become a private university. So these are three types of universities for the promotion of research and innovation. And one important point I must tell you, that this establishment of National Research Foundation, many professors, they say that, oh, we don't get the funding for research, there is a partiality, I think, in the funding, so and so forth. We always try to complain, I think, But let me tell you, NEP-2020 envisages establishment of National Research Foundation, and already it is in the process. The National Research Foundation is a foundation which support research in all the fields of science. And particularly, the professor from the colleges and universities will be supported from National Research Foundation. He will be given the transparent procedure for application. Peer review will be very transparent. And at the same time, entire process will be, I think, completed in 3 months' time, I think. And by that way, a lot of funding available to teachers and professors from the colleges. And here it's estimated that, I think,
the 20,000 crores of rupees funding will be available to teachers from universities and colleges. So I don't think there will be any dearth of, I think, finances now because of National Research Foundation, I think. There's going to be recognition. There's going, I think, to be, I think, the promotions for the same. Those professors who does very, very well, they can get awards, they can get the benefits, they get incentives because of the research contribution, I think. And I must tell you, now, Government of India has come forward, I think, with one concept, I think. A professor in the university can have his own sectioned company. You may be professor, I think, of say mechanical engineering, or I think professor of biotechnology. But you can have your own, I think, you can have your own, I think, the sectional company. You are a owner of a company, in startup, incubation center, plus you are a regular professor in the university, I think. So you are quite important person. So now government has given permission from that too. And this is how, you promote research innovation, I think that, in all sectors, I think, of the university. And the last point, I must tell you, the concept of National Research Foundation, I drafted entire guidelines of NRF. The work went, I think, for the 2 years. The committee has been formed, I think, and hopefully within 2 to 3 months' time, I think, there will be proper announcement of establishment of National Research Foundation for all the branches of knowledge, arts, commerce, science, engineering, mathematics, including the art, drama, everything, including everything, all branches of knowledge will be supported from this, I think. Now the last point I am telling to you. I mentioned in the morning that I think a Global Innovation Index, India has done a very great job, and we expect, because of research contribution, because of publications, I think, we'll be able to contribute significantly. I must add you, in last week, there has been report by Government of India, we are going now 5G. Indian researchers have filed 120 patents in 5G, 6G. 6G. We have gone much ahead, implying the artificial intelligence is a possible, I think, to do a lot of innovations, I think, in research and your topic of your interest, I think. So with this brief, I think I'll stop over here, and I sincerely feel that young researchers and professors have a lot of scope, I think, for research and innovation, and I hope, I think, you'll be able to inspire your student. And my last point, my dear professors, when you guide research student, you must have the feeling he or she is my girl or daughter. Work with that passion, I'm telling to you. Inspire the students, support them, work with them, I think, and see that they become great researchers, I think. Your moral support and your support of knowledge is of paramount importance, developing that student as a scientist, I think. And that is what continuous engagement I think. So this is one fact which NEP-2020 has, I think, given to us, I think. With the brief message, I'll stop over here. And if you have any question with respect, I think, to the research and innovation, you can ask me, I think. Any question you can do to ask me, I think, about your programs, what are the new things, I think, which are going to take place in NEP-2020, what are new regulations have come. Like, for example, PhD programs are going to be complete, I think, redeveloped, retransformed, I think, by NEP-2020. I don't know how many of you, how many students are registered for PhD? How many professor research guides? Are you following the new guidelines, I think, of PhD as per NEP-2020? You have to follow that, I'm telling you, I think. What I mean that, see, you do a PhD in your own domain area of research. Suppose you may be in chemistry, or maybe in Urdu, or maybe in language, I think. But remember, apart from that, there has to be the PhD coursework in the field of pedagogy. You are not B.Ed, but pedagogy is taught to PhD students. Why? Some of the PhD students may become professors in colleges and universities. At that time, shouldn't happen there, they don't know what is pedagogy. Or they wouldn't say that I didn't go for B.Ed, M.Ed. So pedagogy will be taught to the PhD scholars. How many? 10 credit courses in pedagogy. Then syllabus, curriculum development. How to develop a curriculum. The training will be given to 4 to 5 credit courses to students. Evaluation. How to evaluate the students, I think. The training will be given in, and plus there will be training for main domain area of research of students, I think. Suppose one doing chemistry in, I think, English,
or Urdu or Hindi, then main content of that subject will be given to a coursework, I think. Besides this, I think. So what I want to say to these all are the changes which I think are taking place because of the NEP-2020, and I could see a very bright future, I think, I think for the research innovation in India, I think. Thank you very much. Yeah. Any question? Any question about research innovation you can ask? Last 1 minute. Okay, no question? You can ask me later. Huh? Yes, ask question. Huh? Yes, madam. Come ahead. Huh. Huh. Yes. Yes, right now possible, madam. Right now, madam. See, madam, see, as a biotechnology professor, I'll tell you, you can have your own section company, madam. You can owner of your company, not only incubating, madam. You can, right now you can have, yes. And the second question is this, that for the research still, the grants are just writing the eligibility for the permanent post. Huh. What should be for the contractual? Yeah, actually, unfortunately, for contractual position, so far there is no any decision. But one thing, those teachers which are permanent post, I think, are and or those teachers which have regular positions and those which are PhD eligible. For example, I must tell you, this one, I think, research program which will open, I think, on 2nd, I think, of the May, 2nd of May, that's called as a State University Research Excellence. It's abbreviated SURE, sure. So what I suggest to you, all the eligible professors of our KMC, LU University can apply for this, I think, projects. Remember, it's for state universities. Not for contractual, unfortunately, madam. I think this is, I think, a big question, I think, in for all. I mean, it's not only to you. Yes. You can go for ICSR project, I think. ICSR can be, I think, given. No, but I believe that, I say, Honorable Vice Chancellor, I think, will think about this. I'll discuss with him, I think, But see, this is the policy of university. To be honest with you, I must be honest with you, that the contractual professors are not given, madam, chance, I think, to apply for the post by Government of India. However, you do a good job, I think, 2, 3, 4 years, as things improve, I think, probably new position will come from Government of Uttar Pradesh, you'll get, madam, chance, I think, That's only hope, I think, we'll have to do, I think, But then you can become incubator, madam. You become incubatee. See, that's what I'm saying to you. You follow the path of incubating, madam. And incubator, there is funding. For incubator, there is funding, madam. So this is another way of doing the same thing, actually. See, I am saying 2 by 5, 10. You are saying 2 plus 2 plus 2 is equal to 10. Ultimately, same is same. Okay, good. Any other question? Any other question? Okay, if not question, I'll stop. Thank you very much. Thank you so much, sir, for sharing your intense wisdom with us. Now, I would like to request Professor Masood Alam, sir, to come on the mic and say a few words. स्टेज में बैठे हुए प्रोफेसर चोबड़े साहब, प्रोफेसर बवार साहब, डॉक्टर अजय जमाल, इस्लाम मोहम्मद साहब, डॉक्टर तथीर फातिमा मैडम, डीन्स, फैकल्टीज, कलीग्स, स्टूडेंट्स, डेलीगेट्स। सर की जो स्पीच थी या जो एनईपी पे आपने बात की, तो मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, बस एज ए मेंबर ऑफ एनईपी मैं अपनी यूनिवर्सिटी वाले बताना चाहता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले एनईपी लागू किया
और 2021 में जो हमने NEP लागू किया, अभी जो UGC का NEP है उसके बिल्कुल 99% करीब करीब है वो। ये हमारी पहली स्टेट यूनिवर्सिटी थी जिसने CBCS लागू किया। पूरे प्रदेश में किसी भी यूनिवर्सिटी ने लागू नहीं किया। हमारी और प्रोफेसर हैदर अली साहब ने बहुत कोशिश किया कि हम उसी पैटर्न में जाए जिस पैटर्न पर हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी खुली थी। हम लोग 2013 से यहाँ पे ऑनर्स और सेमेस्टर सब चला रहे थे। अब जो NEP का आया है, लास्ट ईयर हमने NEP वही लागू किया जो गवर्नमेंट ने लागू कहा है। अब जो हम लागू करने जा रहे हैं वो हमारा CBCS सिस्टम, हमारा जो ऑनर्स सिस्टम था उसी के अकॉर्डिंगली है। पहले भी हमने जो है ये छूट दी थी स्टूडेंट्स को कि किसी स्ट्रीम का हो आकर के MA कर सकता है। बाद में कुछ दिनों कुछ ऐसा फेज आया कि जो है नहीं, रिजेक्ट कर दिया गया था कि जो सब्जेक्ट से करके आया वही करेगा। लेकिन इस NEP ने हमारे उसी बात को फॉलो किया है। तो जैसे कहा जाता है इंग्लिश में, जब बंगाली कहते थे पहले ब्रिटिश राज में, बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। तो हम ये कह सकते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में कि MC थिंक्स टुडे एंड अदर यूनिवर्सिटीज टुमारो। इसके अंदर जो लैंग्वेज की बात की गई है कि हर बच्चे को उसके मदर टंग में हम एजुकेशन देंगे, तो एज ए लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। इस NEP की वजह से जो लैंग्वेज के नाम पर डिस्कशन होता था, कभी उर्दू के नाम पर, कभी बंगाली के नाम पर, कभी असमी के नाम पर, कभी तमिल के नाम पर, कभी जो है और जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, ये ख़त्म होगा। इससे दूसरी जो कंट्रीज़ हैं जैसे वेस्ट में, ये बहुत पॉपुलर है। मैं जाता रहता हूँ, यूएस में देखा मैंने, टर्की में देखा मैंने कि जो बच्चा जिस मदर टंग से बिलोंग करता है उसको उसी मदर टंग में उनको एजुकेशन दी जाती है। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, बच्चा वो लैंग्वेज समझता है जो मदर से सीख के आता है वो। तो हम इस सेमिनार के थ्रू एक बड़ा मैसेज देना चाहेंगे कि जो लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के नाते हम ऐसा डिज़ाइन करें, और हमारे यहाँ है भी कि हम सारे स्टूडेंट्स को एक लैंग्वेज पढ़ाते हैं। और उम्मीद है कि हम उसको जो है, पहले क्रेडिट नहीं था, अब क्रेडिट में उसको टर्न कर देंगे उसको, और हम दूसरी यूनिवर्सिटी के आइडियल बने। हमारी, मुझे लगता है कि हमारी पहली यूनिवर्सिटी है जो NEP-2020 पे भी सेमिनार कर रही है और NEP पे सेमिनार किया है। तो हम इसके लिए एक आइकन बने दूसरों के लिए कि हम जो कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं हमारे करीब के पहुँचे। इससे जो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कहीं छोड़ जाना चाहता है या जो अबकस में आना चाहता है उसके लिए फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Now I would like to request Professor Ehtisham Ahmed, sir, to come on the podium and give an official vote of thanks. Dignitaries at the dais, Chief Guest, Honorable Chief Guest, Chopde sir, Yogesh ji, Nazia madam, Tathir madam, Professor Masood Alam sahab, and my colleague of the dais. Today we are at the stage where we see NEP in a quite matured position. I remember that when we came here in 2013, we started semester system and system of education under honors. We were offering honor at that time at the last year or at the 5th semester. Now we are at this juncture, we find that we are mature enough to adopt the NEP easily in comparison to other universities. I am very thankful to our chief guest who have highlighted in a detailed manner the matter which we are listening here. He enlightened all the aspects of the NEP today, especially in the reference of research and innovation. We know that innovation is creation of something new in response to the environment.
So it is the responsibility of all of us to create something new. जैसा कि बोबडे साहब ने कहा, छोटी सी बात हमें इनकी बहुत अपील की कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में जो बाहर की हैं वहाँ कोई एफिलिएशन नहीं है, उसके बावजूद उनका बजट 90,000 करोड़ या जितना भी इन्होंने बताया है, वो कुछ हमारी सिमिलरिटी हमको इतनी मिलती है सिर्फ कि हमारे साथ भी कोई एफिलिएशन नहीं है, और हम अगर इसी तरह से चलते रहे तो हम भी एक अच्छी रिसर्च यूनिवर्सिटी आगे हो सकते हैं। ये हमारा सोचना है कि हमने इतने चेंजेस अब तक कर लिए हैं एनईपी को लेकर के, सीबीसीएस को लेकर के, सेमेस्टर सिस्टम को लेकर के, कि हम लोग काफ़ी मैच्योर इनफ हैं इन चीज़ों को अडॉप्ट करने में, इसलिए हम आगे बढ़ते जाएंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ मसूद साहब का, जिन्होंने ज़बानों की बात की, लैंग्वेजेस की बात की, कि बहुत ज़रूरत है मजबूत करने की उसे, ऐसे दौर में जब एनईपी में स्पेशली मदर टंग को इतना वजन दिया गया है, इतना वेट दिया गया है कि हमें हर चीज़ को जिसकी जो मदर टंग हो उसमें उसको पढ़ाया जाए। तो दो बातों के साथ मैं अपनी बात शुक्रिया की ख़त्म करता हूँ कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अपने इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं हमने, आगे सारा इम्तिहान बाकी है। थैंक यू ऑर्गेनाइजर्स फॉर दिस हेक्टिक सेशन एंड थैंक यू अगेन फॉर द ऑर्गेनाइजर। Now I would like to hand over the mic to Dr. Tathir Fatma, the moderator for the next session. A very good afternoon. I, Dr. Tathir Fatma, Dean Faculty of Science and Head Department of Home Science, Khwaja Muinuddin Chishti Language University, welcome you all in this technical session of 2 days national seminar on New Education Policy 2020 with special reference to outcome-based education, which has been sponsored by Department of Higher Education, Government of Uttar Pradesh. I request Professor Chandana ma'am and Professor Sanjeev sir to kindly come on the stage and join us. A warm welcome to our esteemed guest, co-chairperson of this session, Dr. Nazia Jamal, University of Lucknow, and our chairperson, Mr. Yogesh Pawar, coordinator of this session, Professor Chandana Dey, and co-coordinator of this session, Professor Sanjeev Trivedi from our university. हमारे साथ हमारे विश्वविद्यालय से जुड़े हैं डायरेक्टर IQAC और प्रोग्राम के कन्वीनर प्रोफेसर हैदर अली सर, प्रोफेसर एहतशाम अहमद सर, और विभिन्न विभागों, डिपार्टमेंट ऑफ अरबी, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ साइंस से हमारे साथ होम साइंस से छात्र छात्राएँ, कंप्यूटर साइंस, बॉटनी, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, केमिस्ट्री आदि विषयों से जुड़े हुए हमारे शिक्षक, छात्र छात्राएँ और रिसर्च स्कॉलर, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ताली की गड़गड़ाहट के साथ आप सभी का स्वागत करें। पोस्ट लंच सेशन है और मुझे उम्मीद है कि एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप लोग एक्टिव लर्नर होने का सबूत अपनी तालियों से दें। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रोफेसर
चंदना डे मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारी को चेयरपर्सन डॉक्टर नाजिया जमाल का स्वागत प्लांट एवं शाल से करें। थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगी कि मैं प्रोफेसर संजीव त्रिवेदी सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ हमारे चेयरपर्सन का स्वागत योगेश पवार जी का स्वागत प्लांट एवं शाल देकर करें। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। अब मैं प्रोफेसर चंद्रा डे से अनुरोध करूंगी कि आप हमारी को चेयरपर्सन डॉक्टर नाजिया जमाल का प्लांट एवं शाल देकर के स्वागत करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी, हमारे मसूद सर ने और हमारे एहतशाम सर ने पहले ही बता दिया है कि हमारा विश्वविद्यालय का पहला जो सेशन स्टार्ट हुआ था वो 2013 में हुआ था। हमारा विश्वविद्यालय प्रथम दिन से सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ाई कर रहा है, जो कि ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ में प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जिसमें प्रथम दिन से ही सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया, चाहे ऑनर्स डिग्री हो या CBCS करिकुलम हो या प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया NEP करिकुलम हो, और अभी हाल ही में UGC द्वारा दिया गया NEP फ्रेमवर्क की बात हो रही है, जो कि हमारे विश्वविद्यालय ने UGC द्वारा दिए गए NEP फ्रेमवर्क पर भी काम शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह सेशन 2023-24 से हम इस फ्रेमवर्क को भी लागू कर पाएंगे। इसका श्रेय हमारी NEP की टीम और हमारे शिक्षकों को जाता है, जो दिन रात मेहनत करके हर सेशन में बदलते हुए करिकुलम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस तैयार करते हैं और अपने आप को अपडेट करते हुए हमारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं। आप लोगों के लिए एक लाइन तो बनती है, नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा, नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप ही बेजार हो जाए। अब मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए एक अजीम हस्ती जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जिनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। शी इज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स with 14 years of teaching experience and a keen researcher in the area of macro international economics, a JRF of UGC in economics, received scholarship from the Government of India for conducting research in the field of economics. She has also among the few selected participants from all over the world for the sponsored United Nations prestigious Big Data program held in Bangkok. In her major researches, she did a cross-country analysis of 10 countries, including Latin America, EMEs, and Southeast Asian countries, such as Malaysia, Thailand, and Indonesia, with respect to capital flows. She also did research project with ICSSR and Ministry of HRDC as a consultant and a co-project director for issues like implementation of ICT programs in UP and the status of street children in Lucknow district. She has also authored 3 books on macroeconomics, international business, and insurance. She also has 4 joint patents to her name, awarded by the Indian Patent Journal Authority of the Indian government. Apart from teaching, she is also actively involved in various administrative duties in the University of Lucknow. She has worked as a head placement team, coordinator of MBA, IB program, assistant proctor, assistant provost, assistant OSD exams, member of the admission committee, member NEP preparation team, DIQAC cell for the institute, etc. She has also done various online courses by the prestigious international universities, such as a course on time value of money, risk return and valuation by University of Michigan, a course on behavioral finance by Duke University, further a course on Python 7 statistics for financial analysis by the Hong Kong University of Science and Technology. तो कृपया तालियों की गड़गड़ाहट के साथ
डॉक्टर नाजिया जमाल का स्वागत करें। आपके लिए एक लाइन कहूँगी, संग्रेज़ों की चुभन का मुझे एहसास कहाँ, संग्रेज़ों की चुभन का मुझे एहसास कहाँ, मैं तो मंजिल की मीनारों पे नज़र रखती हूँ। मैडम, वी आर वेटिंग टू हियर यू। A very good afternoon to one and all present here. First of all, I would like to congratulate the university, especially the faculty and head, Professor Heather Ali sir, for conducting this seminar on the apt topic, new education policy, which is very relevant in the education field these days, as we are witnessing various changes because of this particular policy. I am also thankful to the Vice Chancellor sir and Heather Ali sir for inviting me as a chairperson for this seminar. I would various speakers have talked about a lot on new education policy, but the topic for which I have selected to speak today is that how education policy is new and important and beneficial for the student. Being a young teacher, I understand that students right now are not aware at all about this new education policy, although they keep on listening, they keep on reading about the new education policy, but they actually practically don't have an understanding that what is this new education policy all about and how it has changed their future course of action, your present course of action. So I would like to summarize and brief about the new education policy for the students' perspective. Moving ahead, I would like to continue with the new structure of new education policy. It has devised a new structure of school curriculum wherein there are 4 stages. One is the foundational stage, in which 3 years of Anganwadi or preschool education is compulsory for all the children. The second stage is the preparatory stage. In that particular stage, classes 3 to 5 would be covered. Then third stage is the middle stage, which covers classes 6 to 8. And fourth stage is the secondary stage, which covers classes 9 to 12, followed by the higher education. The reason for categorization these 4 categories is that till now we have a huge diversity in terms of education in the rural sector and the urban sector. Urban sector may be found that this categorization already exists, but in the rural areas, this particular categorization was missing. So since this is new India and new vision which we are following, so there should be some standardization, and with that particular objective, what I have understood is that this particular categorization has taken place in the new education policy in the structured manner. Another area which I would like to cover is the important key points of the new education policy 2020. Before discussing these important key points, I would like to ask certain questions to the students sitting here. मैं ये जानना चाहूँगी आप में से कि हम में से कितने पढ़ने के लिए पढ़ते हैं? हाथ उठा के मुझे बताइए। पीछे मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देख पा रही हूँ। हम में से कितने पढ़ने के लिए पढ़ते हैं? क्या पढ़ने के लिए रिसर्च, आई एम सॉरी टू से सर से पहले सर बीइंग अ साइंटिस्ट सर बिलोंग टू elite research institution, and he is fortunate enough that he have young researchers working with him and brilliant, talented, dedicated minds. But then I, being a teacher in a state university, I have come across during the span of 14 years that हमारे पास जो students आते हैं 90% rather 95% पढ़ने के लिए नहीं पढ़ते हैं. क्यों पढ़ते हैं हम? जॉब के लिए. और क्यों पढ़ते हैं हम? स्टेटस के लिए. और क्यों पढ़ते हैं हम? See, what I have analyzed is that we have 2-3 pressures because of which we study, we go to higher education. One is the economic pressure, of course. जो BA करे है, MA करे है, MBA करे है, उसे तो नौकरी नहीं मिल रही है, तो मैं 12th करूँगा, मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा. Very true. नौकरी मिल गई, उसके बाद supposingly you belong to a rich businessman dad,
and you do not need a job, but then also you keep on continuing your education, BA कर लिया, फिर MA कर लिया, MBA भी कर लिया. क्यों पढ़ रहे हैं आप? आपको रिसर्च भी नहीं करनी है, क्यों पढ़ रहे हैं आप? आपके ड्राइवर का बेटा तो MBA कर रहा है. Naturally you cannot afford to not to have a postgraduate degree, right? तो you have a social pressure that आपको एक status maintain करना है, आपको शादी के बायोडेटा में भी डालना है that you are a postgraduate, you are an MBA. So that is also a reason for which we study. Other than that, there is a continuous social pressure on the parents of the children. आपका बेटा क्या कर रहा है अब? बच्चा क्या कर रहा है आपका? क्लास 12 कर लिया? अच्छा, अब ग्रेजुएशन कर लिया? MA हो गया? MA हो गया? शादी नहीं हुई? जी, एग्जैक्टली. शादी एंड नौकरी, these are the two pillars जो हमें जब तक के नहीं मिल जाते हैं तब तक के we keep on getting these questions. Parents keeps on getting this question. तो वो भी they are also forced कि अच्छा बेटा तुमने MA कर लिया तो अब कुछ करो भाई, MBA कर लो या कुछ वोकेशनल कर लो या कुछ बैंक की कोचिंग कर लो. तो we and no problems with that. See, we all understand. बहुत बार एक Facebook पे या WhatsApp पे कुछ एक मैसेज चला कि आप मछली को पेड़ पे चढ़ाएंगे तो वो फेल हो जाएगी, या आप ईगल को स्विमिंग कराने का रेस में करेंगे तो वो फेल हो जाएगा. नेचुरली आर दे बैड? नो, दे आर नॉट बैड. दे आर मेंट फॉर डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज, राइट? तो पीपल हैव माइंड्स जो एंटरप्रेन्योरियल माइंड्स हैं, पीपल हैव माइंड्स जो रिसर्चर माइंड्स हैं, पीपल हैव माइंड्स जो ड्रामेटिक माइंड्स हैं, ड्रामेटिक सेट ऑफ स्किल्स हैं उनके पास, वो बहुत अच्छे ड्रामा एक्टर्स हैं, वो बहुत अच्छे सिंगर्स हैं. तो आप उनको रिसर्च कराओगे तो वो नेचुरली दे विल परफॉर्म पुअर. उनको आप एंटरप्रेन्योर बनाओगे तो दे विल फेल, राइट? तो व्हाट माय observation during these 14 years of my teaching is that although we are, and do you have an understanding? I'm sorry, in बीच में एक question आपसे और पूछना चाहेंगे. What is the higher education rate in the Western countries? Do you have any idea? If not exact, is it more than the developing countries or less than the developing countries? बताइए, I want an answer from the students sitting behind. Less than the developing countries. What is the percentage of Nobel laureates from all over the world? Western countries से participation ज़्यादा है या developing countries से ज़्यादा है? For sure developed countries से ज़्यादा है. तो why is this paradox? Because वहाँ जो पढ़ता है वो पढ़ने के लिए पढ़ता है. They are actually researchers. They meant for that. Their minds are trained for that and they do it willingly, right? Rest, 90% won't go beyond 10th or 12th. They keep on doing things which they like, right? Why can they do that and why can't we cannot afford to do that? Can anybody tell me? बताइए. Why is the family not giving you support? They themselves need support. They are not in a position to give you support, right? They are also not that emotionally, financially and socially independent that आपको वो हर तरह की freedom दे दें कि जो दिल चाहे करो. I know that you are a very good singer. My child is a very good singer. But am I as a parent have the freedom to give him that option that leave your studies and go and pursue your singing career? I cannot. Somewhere back to my mind, I have this continuous threat that what if usko singing में नहीं चला तो फिर क्या होगा? Am I right? Right. So see, we have, being a developing country and being the second largest populated country, we have this economic and social pressure that we cannot allow our children to pursue their area of choices, right? We are forced to have higher education, right? Either a child likes that or not. So during the course of his educational journey, many of the times, a time comes when he realizes that yes, I'm doing BTech, but what if I'm getting suffocated, right? Why? Because there is a musician sitting inside me and I'm not getting that chance to play my guitar, right?
3 इडियट्स देखी होगी आपने. 3 इडियट्स में आपको वो कैरेक्टर याद होगा जो ऊपर से, जिसने बहुत अच्छा ड्रोन भी बना लिया और उसके बाद वो ऊपर से कूद गया. क्यों कूद गया? क्योंकि वो अच्छा, कहीं बहुत अच्छा गिटार प्लेइस्ट भी था और कुछ उसको वो डेवलप करने को, वो अपनी स्किल्स वो वाली नर्चर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूअस प्रेशर था उस इंस्टीट्यूट में कि उसे रिसर्च ही करनी है और तो कुछ भी नहीं करना है. राइट? तो NEP कहती है कि आप कर लीजिए. दिस इज वन न्यू addition to the students, right? That apart from major, see, I told you that I'll be very practical in my discussion. Students को समझ में आए कि actually हो क्या रहा है नया. तो आप major पढ़िए physics. Your parents has decided, या you might have decided that you'll go for BTech or BSc or MSc. But then side by side you also have an intercurricular or interdepartmental option available to you, wherein you can also pursue your music or your history or your law or whatever you feel like, right? That is one additional advantage available to the students which earlier was not available, right? That is one major good thing about NEP for the students. Other than that, prior to that, there were different grading systems available. Right? There were different, as we understand, there are private universities, there are open universities, there are deemed universities, and there are state government and central government universities. And different set of universities used to follow different kind of grading systems, right? So when they have different grading systems, so when a student used to move abroad, when a student moves from one state to another state, when a company is analyzing the merit of 4 different students belonging to 4 different types of universities belonging to 4 different states, it becomes very difficult to understand. Somebody has got 90%. Easy way में मैं आपको बताऊं तो you can understand कि CBSE का pattern पहले कुछ percentage अलग होता था. 10 years back UP board का student जो 65% मिलता था वो ज़्यादा अच्छा होता था rather than an ISC student who got 98% marks, right? Because there were different exam grading patterns, there were different ways of evaluating the copies, right? Different criterias. So that becomes a complicated task for the student later on when he enters into the market, that he got 65%, although he's better, but then he got 65%, whereas the ISC student or a CBSE student is getting 90%, 95%. So that has also been resolved now, and now there is one common grading pattern for all the different types of universities, National University, Open University, and all the other universities, and they'll be getting similar kinds of grades with the similar kind of exams, with the similar kind of syllabus. So this brings standardization in the education system. This helps the students later on to be on the common platform once they enter into the practical market. Other than that, as sir has mentioned earlier, Chobade sir, that research is the key for growth and development of any particular society, and I solely believe in that. I truly believe in that, that being a researcher, research is the area from where the development process starts. So unless and until critical thinking, critical analytical thinking in young minds is not being nurtured, till then you will not be able to grow and develop up to the fullest maximum potential of yourself and of your country, right? So for that, certainly research there is an additional emphasis in this new educational policy on research and development and on incubation centers, which will surely bring greater results to the university itself and largely to the society, country, and overall the contribution of India in the growth and development of the world eventually will increase. Thank you. With these words, I would like to thank. बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम सब आपके ज्ञान से लाभान्वित हुए हैं. मैडम, यू हैव फोकस्ड टू डेवलप एंटरप्रेन्योर एंड रिसर्च माइंड्स. समय का ख्याल रखते हुए अब मैं दावत कलाम पेश करना चाहूँगी आज के इस सेशन के चेयरपर्सन
मिस्टर योगेश पवार जी को कि आप बराए मेहरबानी पोडियम पर आएँ और सिंप्लीफाइंग इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग अटेनमेंट पर हमारे श्रोताओं का मार्गदर्शन करें। सर, थोड़ा सा मैं आपके बारे में ब्रीफ कर दूं कि Mr. Yogesh Pawar is BE Mechanical from Pune University. He is member of ACCAB, co-founder and COO at Digital Rate, coach for business excellence, reckoned among experts to work for enhancing rewarding and leadership role in the manufacturing, service and education industry, directing the company's operations for the benefit of employees, management, investors and customers. His exposure to the quality and operations of numerous companies is instrumental to bring in the required wisdom, zest and vigor to the digital edu. His penchant for dealing with real-world solutions fuels practical aspects to all process and products. Sir, I request you to kindly come upon the dais and share a few words of wisdom. Good evening all, and I really thankful for it giving me opportunity to be part of this prestigious event, national seminar, 2 days national seminar on National Education Policy 2020, okay, and outcome-based education. I'm personally thankful to the Vice Chancellor for organizing this event, to Haider Ali sir, Professor Sonkar, and other members of the organizing committee, as well as I pay my sincere regards to the respected members on dais and my colleagues, delegates, and my friends. So the topic which has been given to me is simplifying the evaluation of learning attainments. Based on my last 10 years association with education industry, I found that education domain or education industry is lagging behind in terms of technology with respect to other industries. So adoption of technology in education has took its maximum peak during our COVID season. You all as an teaching faculties, as an educrats might have experienced this, right? But this was into teaching and learning process. So since there was a challenge, the solution has been invented by the professors. But apart from this, there are many other aspects where technology can add value in terms of education management or in terms of improving the quality of education. And in that, the national education policy, there are certain requirements which has been specified. There are certain points where they have very specifically insisted, and we all are aware that outcome-based education. So that has been focused, and since morning we have listened to many members, many speakers, that what is the importance, how it needs to be implemented. So according to me, what I have found out that there are certain things which are creating some kind of hesitation or kind of an fear in the minds of my dear professors, educrats, that how outcome-based education can be adopted by a university or an autonomous college or an affiliated institute.
the adoption methodology will differ from institute to institute in these three categories. When I say affiliated institute, the methodology of adopting outcome-based education would be little different than the autonomous college than compared to the university. University has a full freedom of defining your own syllabus, okay? Then professors of university has a full freedom to design their own curriculum. The university has a full freedom to define their own program outcomes, course outcomes, program specific outcomes, okay? And as you go to affiliated institute, few affiliated institute says that we are not designing the syllabus. So how can we define program outcome? Is this question valid? Have you understood my question? Some affiliated institute says that we are not designing our syllabus, we are affiliated to XYZ university, and that's why we cannot define our program outcomes. Is this statement correct? Okay. I'll give you a parallel example. See, there is a X university, and that X university has 50 affiliated colleges, and university defines the syllabus. According to University Act or University rule, that syllabus will be implemented, syllabus will be delivered to the student. But the way syllabus will be delivered to the student of these 50 colleges will remain the same? Will it differ from institute to institute? Delivery of syllabus. Syllabus will be same, but delivery of syllabus will be differ from institute to institute, right? Whether the quality of students or quality of learners will also differ from institute to institute. So when I'm defining the program outcomes of my institute, what I will have to consider? I will have to consider the current level of my students and what graduate attributes I would like to build into those students by delivering that particular specific program to them. Do you agree with me? So what are graduate attributes? Can you change the slide? So there are certain terminologies. I am just brushing up your thought process. Okay, I feel that you have more worked into these terminologies practically. So what do you mean by graduate attributes? Graduate attributes are the skills which need to be developed into the students, right? What is program outcomes? What is program outcomes? These are certain qualities, okay, which you as an institute would like to develop into your student after undergoing this 3-year program, 4-year program, right? What are program specific outcomes? Why I am refreshing these phrases? Because these phrases are further considered into the calculations, right? So what are program specific outcomes? Okay, I'll give you example. Say
I have plain BSc. Okay, so program is plain BSc. Okay, but in that you have BSc in physics, BSc in chemistry, BSc in mathematics. Does that person or the knowledge of the person differs, or do he get any kind of specific knowledge or skills developed by undergoing that program? Right? So there are certain common aspects which you are labeling as program outcomes. There are certain aspects which you have identified which need to be developed. Those are program specific outcomes. Right? Now, when the syllabus of the university is being designed, okay, then you have subject 1. Okay, in semester 1, semester 2, unit 2 of that subject, semester 3, unit 3 of that subject, right? So this kind of level gets increases, right? Does the outcome of that course changes from semester to semester? Have you ever thought of all such things when you have drafted your program outcomes and course outcome? So before coming to this question, in our university, have you documented your POs and COs? Very good, right? Now comes a complex thing which we were discussing during lunch also, that what is a relationship between, or how a professor can build a relationship between program outcomes and course outcomes. इसको मैं काफ़ी सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा. How many program outcomes you may have? You may have 12 program outcomes and 3 program specific outcomes, so total 15, right? Imagine you have a basket of 15 different varieties of fruits. So you have banana, you have apple, you have pineapple, and 15 different types of fruits you have, right? So these fruits coming together, okay, in a basket becomes your program outcomes. And how the relationship of these program outcomes will be established with your course outcome. When you design your courses, in that case, say you have designed a course named as banana milkshake. So how much percentage of banana is there in the milkshake? Say 50%, right? Okay. If you say mixed fruit punch, what will be the percentage of each fruit getting into that fruit punch? Less than 10%, right? So when you are designing your course, how much that course is linked with your specific program outcome? What criteria of your program outcome is getting fulfilled by your course? And this is how you can categorize them in 3 level or 4 level: 0, 1, 2, 3. Right? And by referring to the syllabus of that course, by referring to the course outcome statement which you have defined for that particular course, you can correlate, you can build a relationship easily that
this course outcome is linked with this program outcomes with level 1, 0, 1, 2, 3. Right? You can say low, medium, high. That is also terminology being used in several universities. Right? Now next comes your POCO mapping is over. Correct? What next? What is next? Mapping is done. Next is measurement. Why measurement is insisted? कोई बता सकता है मेजरमेंट क्यों इंसिस्ट किया गया है? अगर मेजरमेंट निकाल दे तो क्या होगा? ओके, एग्जाम्स होते हैं स्टूडेंट्स के, होते हैं एग्जाम्स होते हैं ना. ऐसा अगर हो गया कि एग्जाम्स ही खत्म हो गए तो क्या होगा? एक बहुत खूबसूरत सी एक स्टेटमेंट है फ्रॉम डॉक्टर जुरान. ओके, ही सेड दैट एवरीथिंग विच कैन बी monitored and measured can be improved. Right? So with the same philosophy, with the same management philosophy, this outcome based education has another aspect, and that aspect is called as evaluation. So outcome based education and evaluation. So when I say education, that is a teaching and learning part, starting from your designing syllabus, defining your POs, defining your COs, mapping, using different pedagogic techniques to deliver your curriculum to the students. That is education. Correct? Right? And when it comes to the next part, जो मैंने मेरे स्टूडेंट्स को सिखाया है वो उन तक कितना पहुंचा है, इसको हम लोग कैसे जज कर सकते हैं? चलो मेरा ये एग्जांपल ले लो. अभी जो कुछ मैंने डिस्कस किया वो आप तक कितना पहुंचा होगा? So how will you measure output? Oh, that's a more diplomatic answer. Thanks, but हम लोग practical measurement, tangible measurement की बात कर रहे हैं. So tangible measurement कैसे हो सकता है? चलो मैं एक हिंदी भाषा का शिक्षक हूं और मेरे क्लास में 100 बच्चे हैं. राइट? मैं सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाता हूं. राइट? कैन आई गारंटी दैट एवरीवन विल स्कोर 90%? नहीं. क्यों नहीं होता ऐसा? So adaptability of the knowledge, okay, expression of the knowledge when it is needed, that is also one of the skill which needs to be developed into the student. और ये कैसे आएगा? ये कैसे आएगा स्टूडेंट्स में? जब आप उनको इस तरह का मौका दोगे. बराबर है? सो क्या हम जब ये शिक्षा प्रदान करते हैं तो इस तरह का कुछ मौका उन्हें देते हैं? आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सुना है? राइट? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सुना है? कितने लेवल्स होते हैं? 6 लेवल्स होते हैं. या सबसे नीचे वाली लेवल कौन सी है?
रिमेंबर, राइट? याद है कि स्लाइड में दिखा दूं? ओके, सबसे नीचे वाली लेवल है रिमेंबर, राइट? सबसे हाईएस्ट लेवल क्या है? नहीं है, स्लाइड में नहीं है वो मैं आपको कल दिखा दूंगा। मुझे लगा कि सभी लोगों को जुबानी याद होगा, इसलिए मैंने वो डाला नहीं है स्लाइड में, बट आई विल शो इट टू यू टुमारो। व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल? इज अ क्रिएट, बराबर है? तो ये जो लेवल्स हैं, इन लेवल्स में स्टूडेंट को अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका क्या हम एडुकेटर्स उनको दे पाते हैं? अगर वो स्किल्स ही डेवलप नहीं हुई तो उन स्किल्स को हम लोग इवैल्यूएट कैसे करेंगे? आप समझ रहे हैं, राइट? जूनियर केजी, सीनियर केजी में जाने वाले बच्चे को कहा जाता है कि पतंग उड़ाते हुए फैमिली की एक चित्र निकालो। वो बच्चा कोशिश करता है अपनी इमेजिनेशन से? करता है क्या? कितने बच्चे सही में पतंग उड़ाने वाली फैमिली को पेपर पे रिप्रेजेंट कर पाते हैं? कोशिश सभी करते हैं अपने अपने लेवल पे, बट सभी का एक्सप्रेशन एक जैसा होता है क्या? नहीं होता है। दिस इज हाउ द स्किल्स, सच स्किल्स कैन बी इवैल्यूएटेड। अभी इन स्किल्स को इवैल्यूएट करने के लिए मेरी डे टू डे टीचिंग टेक्निक्स में क्या इन्वॉल्व करना पड़ेगा और कैसे इन्वॉल्व करना पड़ेगा? सोचा है कभी आपने इस बारे में? ओके, कुछ स्टूडेंट्स हैं पीछे, ओके, शायद ये जो डिस्कशन हमारा चल रहा है उन तक पहुंच नहीं रहा है। मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज करता हूं एंड आई विल गिव यू ऑल एग्जांपल। एक दो 60% मिले हुए स्टूडेंट्स की स्किल लेवल एक जैसी होती है क्या? नहीं होती। होती है? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बराबर है? इज देयर एनी मैकेनिज्म टू मेजर इट? मेजर कर सकते हैं क्या? स्किल्स को मेजर करने के लिए 6 लेवल्स में उसको बांटा गया है बाय द साइंटिस्ट मिस्टर ब्लूम्स, राइट? तो ये जो 6 लेवल्स के स्किल्स हैं, ये आप में एज ए स्टूडेंट कितने लेवल पे बिल्ड हुए हैं, इसको एसेस किया जा सकता है। और उसका एक मॉडल मैं आपको शेयर करने वाला हूं अभी, ठीक है? सो स्टूडेंट्स, इट्स फॉर योर इंटरेस्ट, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है 2 साल बाद कि आपकी मार्कशीट ना देखते हुए आपके प्रोफेसर से यह स्टेटमेंट मांगा जाए कि योगेश पवार के में कितने स्किल्स हैं, उसका एक स्टेटमेंट हमें दे दो, राइट? और इसको इवैल्यूएट करने का आसान सा तरीका भी तो होना चाहिए। होना चाहिए क्या? तो ये तरीका कैसे बिल्ड होगा और इसके लिए प्रोफेसर्स को कितना काम करना पड़ेगा? यही सवाल आ रहा है मन में, बराबर है ना? ऑलरेडी बहुत ज्यादा वर्कलोड है, ओके, जो और नैक की वजह से तो डॉक्यूमेंटेशन का ऐसा काम सर पे चढ़ गया है कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है, बराबर है ना? और उसके साथ सर आप ये बोल रहे हैं कि ऐसा भी कुछ करना चाहिए, बट दैट इज व्हाट इज एग्जैक्टली द ऑब्जेक्टिव ऑफ, उसको अलार्म है वो, उसको सिर्फ बंद कर दीजिए। सो इसको इवैल्यूएट करने का जो मैकेनिज्म है, एक सिंपल सा तरीका है जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन के बाद वाले इवैल्यूएशन में
जज किया जा सकता है, असेस किया जा सकता है. ठीक है? So let's go to that model, right? This model has been designed and developed by Digital Edu, who is working in education domain since more than a decade, headed by 3 different professionals, college friends, who formed this as a startup bootstrap company. I'm one of the founder member. Yogesh Mahajan is acting CEO. Sandeep Chaudhary is Chief Technology Officer. And more than that, we have been supported by many domain experts to reach to this level. जो कहते हैं ना कि एक धार लाने का काम, ये हमारे जो गाइड मेंटोर्स हैं, जो हमारे साथ सालों से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये काम किया हुआ है. So let's go back to that model. ओके सो और एक सवाल है मेरा आपसे सभी से कि जब आप ओबी इम्प्लीमेंटेशन करने का सोचते हैं तो आपके दिमाग में एज एन प्रोफेसर सबसे डिफ़िकल्ट क्या लगता है? डिफ़िकल्ट पार्ट क्या है? इवैल्यूएशन डिफ़िकल्ट पार्ट है, राइट? सो हमने कोशिश की है कि इस इवैल्यूएशन को ही सिंप्लीफाई किया जाए, राइट? और ये जो पार्ट अभी मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, इसी को हम सभी को मिलके कल एक हैंड्स ऑन सेशन लेना है, जिसमें आपको भी इसी तरह के एक अलग पोर्टल का लॉगिन दिया जाएगा, जिसमें आप लॉगिन करके ये सारी चीज़ें ऑपरेट करके देख सकते हैं अपने पर्सनल लेवल पे, ताकि आप एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकें कि यस दिस मॉडल वर्क्स और दिस मॉडल कैन बी अडॉप्टेड इन माय यूनिवर्सिटी, इन माय प्रोग्राम. ओके, what is this? This is a dashboard. So on the dashboard, how many programs have been defined? One program is defined. How many courses have defined? 6. Okay. So how many calculated attainments are there? 12 calculated course attainments are there. How many course outcome setups are there? Okay. So this is giving me a statistical analysis of the PO and CO of a particular program which I have defined in the system, right? Okay. Now, after churning all the data, okay, system will give you a output which may be of your interest. So हम लोग जर्नी जो है वो रिवर्स करने वाले हैं. जो फाइनल आउटपुट है सिस्टम का वो मैं आपको पहले दिखा रहा हूं, एंड देन वी विल मूव स्टेप बाय स्टेप how we have reached to this level. So there's a OBE master report, right? So in this OBE master report, I have selected the institute,
Digital University. Academic year I have selected. Program I have defined as a Bachelor of Information Technology, right? इसका जो syllabus का copy है, that is also I will show you. In syllabus you will find the program outcomes, course POCO mapping defined by the institute. So that data has been fed into the system, okay? Okay. Fine. The report what is getting generated, okay, you can able to see what is the name of the program. Bachelor of Science Information Technology. Yes, I'm coming to that. First is I have entered my program outcomes, I have entered my course outcomes, right? I have entered the POCO mapping, right? So my module is tuned now to analyze the attainment levels. So इसके बाद मुझे इसके अंदर एग्जामिनेशन के जो मार्क्स हैं वो एंटर करने हैं, right? So affiliated institutes and universities are running two different models, okay, when entering the marks. The software is capable of handling both the things, right? So पहले simple model पे हम लोग चलते हैं. For example, आपकी affiliated colleges हैं, तो affiliated colleges के पास सिर्फ subject level marks आते हैं, right? So subject level marks जो हैं उसमें आपके पास internal assessment 1, internal assessment 2, semester end exam, इस तरह से 3 assessment हो सकते हैं, 4 assessment हो सकते हैं, 5 assessment हो सकते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि पहले 3 assessment का average लेना है या पहले 3 assessment का best लेना है. So इस तरह से भी इस मॉडल को ट्यून किया जा सकता है, right? Marks are uploaded into the system with bulk upload facility, right? इसके बाद हर subject, for example, Excel data will be fetched by this system, right? And when you reach to a level that all the marks of all the assessments are fed into the system, system will automatically calculate your attainment levels. बराबर है? ठीक है? यहां तक समझ में आया? ओके, कल हम लोग ये हैंड्स ऑन करके देखने वाले हैं. अभी सिर्फ आप इसको समझ लीजिए कि मॉडल किस तरह से बिल्ड किया जा सकता है. So the model which I have explained you for affiliated institute, where subject wise assessment marks can be uploaded, imported into the system. So tomorrow I am going to give you one sample data files of various different subjects which you can import into the system to generate this kind of report, right? Second model क्या आता है? Second model will come where subject wise and question wise marks has been given into the system,
Right? Is it possible? कि जब मैं क्वेश्चंस का असेसमेंट कर रहा हूं उसी वक्त मेरा अटेनमेंट कैलकुलेशन भी हो जाए. So the second model, which is for universities, so that I'm showing you here. और ये दिखाने के बाद एक बहुत आसान सा सवाल आपकी तरफ से होगा. ओके. इस ऑन स्क्रीन असेसमेंट के साथ यहाँ पे अभी किसी मुझे लिस्ट नहीं मिल रही है कि कौन सा स्टूडेंट मुझे इवैल्यूएट करना है. कल मैं आपको स्टूडेंट को इवैल्यूएट करके दिखाऊंगा, वक्त की भी कमी है. तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आप एसेस कर रहे हैं और उन क्वेश्चंस को जो मार्क्स दे रहे हैं वो सिस्टम स्टोर कर लेती है और उसी लेवल पे उसका उसी वक्त अटेनमेंट कैलकुलेशंस भी सिस्टम कर लेती है. अभी आप ये कहेंगे कि क्वेश्चंस के साथ कौन से कोर्स आउटकम और कौन सी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लेवल लिंक्ड है. राइट? होना चाहिए, बराबर है ना. मार्क्स तो आपने दे दिए, विच इज वेरी नॉर्मल, विच आई थिंक यू माइट बी डूइंग इन योर ऑन स्क्रीन असेसमेंट टूल. बट दिस सिस्टम will import your question bank, will create the pattern which you want for various different subjects. हिस्ट्री के लिए अलग सब्जेक्ट होगा, हिंदी के लिए अलग सेक्शंस का पैटर्न होगा, उर्दू के लिए अलग पैटर्न होगा. And based on that pattern, system will generate question paper sets linked with course outcomes. So जब ये स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तब असेसमेंट करते वक्त इसके जो मार्क्स दिए जाएंगे उसी मार्क्स के बेसिस पे सिस्टम बैकएंड में अटेनमेंट कैलकुलेशंस भी आपके करके रेडी रखेगा. सो टिल दैट टाइम योर रिजल्ट्स गेट रेडी, टिल द टाइम योर वर्जिन स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स गेट रेडी, टिल द टाइम योर ऑर्डिनेंसेस के साथ ग्रेस मार्किंग के साथ आपके लेजर्स रेडी हो जाते हैं, पैरेलली आपके अटेनमेंट कैलकुलेशंस भी हो जाएंगे. सो आपका नो, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट एग्जाम डिपार्टमेंट ऑटोमेशन. आई एम ओनली डिस्कसिंग अबाउट द पार्ट विच इज इवैल्यूएशन. सो इस इवैल्यूएशन को ऑटोमेट करने के लिए इन सारी चीजों को किया जा सकता है और ये प्रैक्टिकली किया गया है कुछ महाविद्यालयों. इसमें क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन एग्जाम फॉर्म फिलिंग से लेके मार्कशीट जनरेशन तक, ओबी कैलकुलेशंस तक 100% पेपरलेस ऑपरेशंस एग्जीक्यूट किए गए हैं. क्वेश्चन पेपर भी सिस्टम ही जनरेट करके देता है आपको, और क्वेश्चन पेपर जनरेट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है. यू माइट हैव डन इट इन कोरोना. कोरोना के पीरियड में आप अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करके किए होंगे. No, currently not. Currently it is designed specially for the private universities and autonomous institutes who would like to
execute this model for assessing the skills of the students. When I'm saying assessing the skills of the students, तब मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं और हैदर अली सर ऐसे दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों को ही 60 मार्क्स मिले हैं, बट दोनों को सेम क्वेश्चन पेपर आने के बावजूद योगेश पवार ने BTL1 ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लेवल 1, 2, 3 के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और उनको 60 मार्क्स मिले, वेयर एज हैदर अली सर को ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लेवल 4, 5, 6 के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद 60 मार्क्स मिले. सो क्या मैं ये स्टेटमेंट इनके पूरे सब्जेक्ट्स का और मेरे पूरे सब्जेक्ट्स का एट द एंड ऑफ ग्रेजुएशन दे सकता हूं कि व्हाट इज द स्किल लेवल ऑफ हैदर अली सर एंड व्हाट इज द स्किल लेवल ऑफ योगेश पवार? और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. इतना ही ऑटोमेशन पॉसिबल है. इसके अलावा अगर और कुछ हम लोग ऐड करना चाहते हैं तो मैं ज़रूर जुड़ना चाहूँगा. वक्त की कमी की वजह से मैंने इसका जो एग्ज़ाम वाला पार्ट है वो सिर्फ मैंने आपको वर्बली एक्सप्लेन किया है, विच वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इट टुमारो. वी आर गोइंग टू अपलोड अ क्वेश्चन बैंक, वी आर गोइंग टू अपलोड we are going to create a sections of the question paper. We are going to generate a question paper. We are going to upload the marks. We are going to assess the paper on screen. ठीक है? और हम लोग पूरे अटेनमेंट कैलकुलेशन का रिपोर्ट इस तरह से PDF का बटन दबा के एक प्रोग्राम का एक रिपोर्ट सिस्टम आपको जनरेट करके देगा, जिसके पीछे बैक एंड में पूरे कैलकुलेशंस हैं. ठीक है? सो क्वेश्चन पेपर पे भी उसके अगर बैकेट में आप चाहिए तो CO कौन सा क्वेश्चन कौन से CO से लिंक्ड है, अभी जो डमी है उसमें वैसा ही किया हुआ है ताकि आपको विश्वास कर सके आप. ठीक है? सो यहाँ पे मैं रुकता हूँ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग मी. And I hope I could able to create interest in you for tomorrow's session, right? अभी थोड़ी सी संख्या कम है, बट शायद सुबह मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप सभी लोगों से. एंड I'll assure you कि एक अलग मॉडल जो है, एक डिजिटल टेक्निकल असिस्टेंट क्रिएट करने की कोशिश हम कर रहे हैं ताकि प्रोफेसर्स अपना जो कीमती वक्त है वो शिक्षा पे ज़्यादा इन्वेस्ट करें और जो क्लेरिकल काम है उस पे कम से कम करें. ठीक है? थैंक यू. सर, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं. आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है और हमारा ज्ञानवर्धन किया. आपने जो टॉपिक्स कवर किए बहुत ही रेलिवेंट और महत्वपूर्ण हैं, especially making of CO and PO with the help of example. सर हमारे साथ कल भी जुड़ेंगे और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग कल हमें ज्वाइन करेंगे. Now I request Professor Sanjeev Trivedi, Director Faculty of Engineering and Co-Coordinator of this session, to share his thoughts. मंच पर उपस्थित सभी हमारे गणमान्य व्यक्ति, डॉक्टर नाजिया जमाल मैम, मिस्टर योगेश पवार जी, प्रोफेसर BA चापड़ा जी, तथीर फातिमा मैम एंड प्रोफेसर डे मैम. जैसा कि हम इस कार्यशाला में 2 दिवसीय जो देख रहे हैं कि ये NEP 2020 पे बात हो रही है, यहाँ पे हमारे बीच में सबसे पहले डॉक्टर नाजिया जमाल मैम आई हैं और उनको मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना और उनका जो भी उद्बोधन था मुझे लगता है वो बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रही थी और किस तरह से हमें डिफरेंस देखना है स्टूडेंट के बीच में. खाली पढ़ाना नहीं है, उसका विजन क्या है, क्या क्रिएट करेगा, आउटकम की बात हो रही है. यहाँ पे हम एक बच्चे को पढ़ाते हैं, B.Tech पढ़ा रहे हैं, B.Tech के बाद वो डिग्री लेकर निकल रहा है. अगर वो मैकेनिकल की डिग्री लेकर निकल रहा है तो उसका आउटकम क्या है. इस चीज़ को मैम ने बहुत ही अच्छे तरीके से शायद बताने का प्रयास किया
कि अगर कोई म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है और वो कुछ काम नहीं कर पा रहा है, तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस कोरिलेट करते हुए मैम ने बहुत कायदे से बहुत ही सरल भाषा में बताने का प्रयास किया है। इसी के साथ हमारे जो दूसरे कंटेस्टेंट थे मिस्टर योगेश पवार जी, सर के लिए तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सर का जो टॉपिक है वो इतना बढ़िया टॉपिक है, शायद उसके हिसाब से आज यहाँ ऑडिटोरियम में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। और इसके लिए मैं लिटरली सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कल वाले लेक्चर में, बेसिकली आई बिलोंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और हमें इस टॉपिक पे बहुत कुछ करने का अभी बताया जा रहा है कि करना है। और हमारी जितनी भी फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की जो भी फैकल्टीज़ यहाँ पे बैठी है, उसमें हमारे यहाँ डॉक्टर ममता शुक्ला मैम बैठी हैं, शान फातिमा बैठी हैं, और विवेक जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं। दे आर ओनली 4 एंड वी आर मोर देन 35। तो कल मैं कोशिश करूँगा किसी तरह से सारे कैंडिडेट जो हमारे जो भी फैकल्टी मेम्बर्स हैं वो आएँ और इस टेक्सोनॉमी, बूम टेक्सोनॉमी के बारे में बहुत ही कायदे से जो आपने बताया, COP मैपिंग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कहीं ना कहीं हमारे वाइस चांसलर जो हमारे मुखिया हैं वो भी चाहते हैं कि हम लोग आने वाले समय में NEP के हिसाब से, हमारा क्वेश्चन पेपर भी सर उस हिसाब से डिज़ाइन नहीं हो रहा है, उसके लिए भी आपकी एग्जामिनेशन में उन्होंने बड़ा फोकस वे में कहा कि इसको आप जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करवाइए। तो सर से हमने रिक्वेस्ट करी, सर ने मुझसे 1-2 दिन पहले कहा भी था कि बहुत ही जल्दी हम कुछ ऐसा करवाएंगे तो आपका जो ये वाला पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल के हमारे बीच में आके इस कार्यशाला में अपना कीमती समय दिया, और पूरी कोशिश करते हैं कि कल हम आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि जो कमियां आज आपको दिख रही हैं स्ट्रेंथ की, वो आपको पूरी तरह से मिलेंगी, और जो भी ऑप्शंस होंगे वो हम आपसे सीखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं निवेदन करना चाहूँगी डायरेक्टर IQAC एंड कन्वीनर ऑफ दिस प्रोग्राम प्रोफेसर हैदर अली सर से कि आप हमारे मेहमान मिस्टर योगेश पवार जी का मोमेंटो देकर शुक्रिया अदा करें। अभी वो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आग्रह डॉक्टर रुचिता सुजाय चौधरी से है कि आप हमारी को चेयरपर्सन डॉक्टर नाजिया जमाल का टोकन ऑफ रिस्पेक्ट से शुक्रिया अदा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने विश्वविद्यालय की संकाय अध्यक्ष सामाजिक विज्ञान प्रोफेसर चंद्रा डे को आमंत्रित करना चाहूँगी कि आप हमारे मेहमानों का अपने शब्दों से शुक्रिया अदा करें। Thank you, Tatir. Being from the Department of Education, whenever we think of NEP, we think about recognizing, identifying, and fostering the creative and unique capabilities of the students, and as well as sensitizing the parents, teachers, and society as a whole. NEP, as has already been spoken about and discussed very beautifully by Professor Chorpade in the previous session, emphasizes on the extensive use of technology. NEP has now more emphasis on conceptual learning, as we all know. I congratulate Professor Syed Haider Ali for choosing such a beautiful topic, relevant topic, for the national seminar today and convening the program. I thank Dr. Nazia Jamal, co-chairperson of this session, for throwing light upon how NEP is useful for our students. I thank Mr. Yogesh Pawar, chairperson of this session, for sharing his experiences, and particularly the CO and the course outcomes, as well as the course-specific outcomes and how they can be mapped. And I think it is, his entire lecture was very technical in nature, and we are looking forward
for a more extensive lecture from him tomorrow. I thank Professor Sanjeev Trivedi and moderator Dr. Tathir Fatima of this session. And I also thank my colleagues and the students who have been very patient in listening to all our guests today. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ स्टेज पर आएँ एक फ़ोटो सेशन के लिए। रुचिता मैडम, हैदर अली सर, आप सभी कृपया स्टेज पर आएँ, एक अच्छी सी फोटोग्राफ हो जाए। All are requested to please join us. Please, Mamta ma'am, Abhishek, everyone, please join us. Photographer को छोड़ के everybody please join us. Mohsin, please do the honor followed by a selfie. आप लोग बैठ वरना पीछे वाले बहुत सारे दिखेंगे ही। सर आप लोग बहुत सुपर सीनियर है, प्लीज बैठ जाइए, अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो ज़्यादा ही लंबी कर रही हूँ, मैं केस को हटा दूँ। चेयरपर्सन की अनुमति से मैं इस सेशन के समापन की घोषणा करती हूँ।